So if you see, uh, yesterday, the one answer that we did at the end was of the Indo-Russia and the Indo-US deals. Okay. So मैंने कहा था कि I will write the answer. So if you see in this particular answer, the introduction with respect to the Indo-Pacific, the center of gravity of world politics has shifted to Indo-Pacific from transatlantic, and India's defense partnership have also shifted due to these changing realities. Okay. Then briefly, you highlight the evolution of India's defense partnerships. First, India-Russia, based on Cold War era cooperation, and the major defense partnerships involve nuclear submarines, aircrafts, missile system, and it is around 36% of India's defense imports. Whereas India-US post civil nuclear agreement, four foundational agreements, and then second largest defense partner. Okay, the major issue that you faced was with respect to the articulation in the second part. So significance of Indo-US defense deals over Indo-Russian in Indo-Pacific context. One, convergence of geopolitical interest. यहाँ पे अगर देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल कि बोथ शेयर कॉमन विजन of Indo-Pacific, which is free and open Indo-Pacific and freedom of navigation. Second, the USA is the resident power with blue water navy. Understand the concept of blue water navy. Blue water navy is that navy which can operate in any part of the world. Okay, so you have, and for that you require the naval infrastructure, as well as the most important thing is the aircraft carriers. ठीक है, इंडिया के पास दो है, चाइना के पास आई थिंक तीन है कुछ तो, यूएसए हैज 17 of them. So that is the level of asymmetry which we have with respect to the US, and that's why US Navy is considered as the blue water navy. Okay, in Indo-Pacific, whereas Russia is the continental power. And Russia's vision is more aligned with China than with India. So because of that, US India defense deals are better compared to the Indo-Russian defense deals. Second, with respect to the security, key, the foundational agreements ensures interoperability and intelligence sharing between India and US. Similarly, joint naval exercises like Malabar ensures freedom of navigation, whereas Indo-US deals like BrahMos S-400 are less relevant in context of maritime domain. ठीक है, अब आर्टिकुलेशन इजी लग रहा है? ठीक है, देन एक्सेस टू एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे P8I maritime patrol aircraft Predator drones strengthens India's role as net security provider. We did that yesterday also in Indian Ocean. Then new frontier of warfare, ठीक है, और fourth generation warfare also you can say कि ICET partnership deepens cooperation in areas of AI, cybersecurity, etc. Russian defense technologies, in contrast, are legacy systems. ठीक है, we have the cooperation mainly in terms of the legacy technologies like the submarines, missile defense, air defense, aircraft, etc. We don't have the cooperation in the areas of cyber security, in the areas of artificial intelligence, etc. ठीक है, then with respect to the diversification or reducing the dependence on Russia, then with कॉड, ये थोड़ा सा 6 पॉइंट इज थोड़ा सा पेरिफेरल है, अगर आपने वो हटा भी दिया तो भी चलेगा कि इन कॉड India and US can promote capacity building, HADR exercises and resilient infrastructure. Whereas challenges,
Strategic autonomy concerns as US expects greater policy alignments. ये हमने कल भी लिखा था. Example, reducing Russian imports. ठीक है. Second, over 60% of the defense inventory is from Russia. So it limits interoperability. Third, US defense export involve limited technology transfer and high cost compared to Russian exports. Fourth, strategic concerns. Even if we want to reduce the dependency on Russia, we can in that by deepening the ties with US, we can have the dependency on US. So dependency on US policy of bait and bloodletting concerns in India-China context. ठीक है. And bureaucratic constraints, differences in procurement procedures, IPR norms, etc., lead to delays. Way forward, defense innovation corridor for Make in India and Make for the World. Then maritime domain awareness, वही keyword है, and naval interoperability. Third, to use 2+2 ministerial dialogue to resolve disputes. ठीक है. इन कंक्लूजन जो हमने इंट्रोडक्शन यूएस के पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप. सो इंडो यूएस पार्टनरशिप इज द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी. इट मस्ट बी ड्रिवन बाय ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. ये आपका कंक्लूजन होगा. अब इजी लग रहा है आर्टिकुलेशन? यस, कंपेयर टू यस्टरडे. ओके, ये क्लियर है? ओके. So this answer I'll share. You won't write. Now, this. Next question. If the last few decades, yes, you can draw that this triangular approach I have picked from the answers of Srishti Dabas, AR6. ठीक है. सो एक आध आंसर में चल जाता है. डोंट डू इट फॉर ऑल द 20. ठीक है. एक आध आंसर में चल जाता है. Then if the last few decades were of Asia's growth story, next few are expected to be of Africa. In light of this statement, examine India's influence in Africa in recent years. You can now focus upon the directive and focus upon the word this and divide the question into the parts. Who wants to give me the structure of this? Yes. Anyone? Easy है यार, काफी easy है. Yes, Manoj. Sir, I will start with the quote, any of the quote. About how Modi has said about Africa, recent quote. No, Modi will Then, talk about India-Africa relations. But the yes, sir. question is not about India. The second part is about India-Africa relations. Yes, sir. I will start with the quote. First, first part is how Asia growth, recent Asia growth, I will show. Few decades were of, Asia growth. yes. Hmm. Then next, I will go how India's influence in Africa, recent. No, this part you have addressed. What about this Yes, part? sir. Um, it's Answer an 10 the mark question, so I will correct. make a tabular form, sir. First, you highlight the rise of Africa. Okay. Then, Yes. hmm, India's influence in Africa. Next. okay. Hmm, And the challenges I will show. yes. Challenges and way forward. Yes. So the Sir, can examination of it in that.
You can make a table on the positives, negatives. challenges. Okay. As this is your implicit demand, you can or you should cover this ideally in the first page itself. Okay. Yes, The second page, you can cover the India's influence in terms of the or the examination of it. Okay. sir. Can I go with the tabular form first? What the demand has said that Which on one? the left side, how Asia's growth happened recent decade. No, but are you Next, comparing that? no, no, sir. So table is used for Comparison, but or here problems and solutions. solution. Okay. At max, you Yes, go for the diagram. You can go for the diagrammatic representation. yes. Okay. Yes. Okay. Now coming to the points with respect to the few decades whereof Asia's growth. So growth in terms of yes, growth in terms of economic growth, growth in terms of trade, growth in terms of energy demands. Okay, that and the rise of Africa. So in what areas there is a rise of Africa? Yes. Hmm. So first of all, while India is the fastest growing economy, Africa is the fastest growing continent. Yeah. Second, Africa has the favorable demography. ठीक है, अब ये जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही आपको देने हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ. थर्ड, in terms of the markets. Fourth, in terms of natural resources, specifically critical minerals. And fifth, in terms of the political stability. Many of the African countries have adopted the democracy or they have consolidated under the different organizations, right? That then the positives in terms of India again, यहाँ पे हमारा वही क्लासिफिकेशन आ जाएगा. जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड मल्टीलैटरलिज्म. सो जो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप वाला जो पॉइंट था, दैट डेवलपमेंटल पार्टनरशिप पॉइंट यू कैन ऐड इनटू द जियो इकोनॉमिक्स इटसेल्फ, या फिर उसको एक सेपरेट आप हेडिंग भी कर सकते हो. ठीक है, इसमें what who wants to give me the points in under this? Yes, I just need the keywords. So जैसे for example, in terms of geopolitical, साउथ साउथ कोलैब और साउथ साउथ कोऑपरेशन, राइट. तो उसका एग्जांपल क्या आप दे सकते हो कि इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20 अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी, राइट. सो AU इन G20. ठीक है. सेकंड, sustained dialogue through Asia annual India Africa Forum Summit. ठीक है. And there is with respect to the Africa, there is one very good quote of while comparing India and China, there is very good quote of Shashi Tharoor. कि African nations uh,
what you can African nations admire China. Okay, they admire China for their growth, but they want to become India. Okay, they admire China for their growth, but they want to become India because of India's democracy, because of India's pluralism, and because of this India's foreign policy, which is pacifist and non-conditional. Okay. In terms of geoeconomics, India is the third largest partner of Africa. Okay. Second, India has provided line of credit to more than 40 African countries for development. Yes. Third, the developmental programs of India include, अब ये program याद रखो, for all the developing and underdeveloped countries, ITEC program. Okay. And for Africa, you have Pan Africa e-network. Okay. You can also give the example of solar mamas, training the African women into renew or with respect to the solar panels. Okay, that is also one successful example. Then in terms of defense and security, ki under Sagar and Indian Ocean Rim Association, India engages in or cooperates in anti-piracy and maritime domain awareness. Okay. Then for connectivity, you have Asia Africa Growth Corridor. Right. And then with respect to one more aspect, India's diaspora. India has 3 million diaspora. This promotes cultural diplomacy. ठीक है, यस यूपीआई वो वाला क्वेश्चन 2025 में है, तो इंडिया अफ्रीका इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप वाला. ठीक है. चैलेंजेस, देन अगेन वन बिनी कंटेक्स्ट में दे दो, जियोपॉलिटिकल की राइजिंग चाइनीज फुटप्रिंट. सेकेंड कि इंडियाज लिमिटेड presence, limited presence as in India doesn't have missions in all nations. Okay. In terms of the geo-economic, again China's debt trap and deep pocket diplomacy. बाकी इंडिया के जो पॉइंट्स है, डिलीवरी डेफिसिट, इसका एग्जांपल, नो प्रोजेक्ट completed under this Asia Africa growth corridor. ठीक है. Then with respect to again economic only, की quality issue, example the recent deaths over
after consuming Indian cough syrup, right? This was in news. Okay, these. Then again, the trade is limited to agriculture and एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि डायस्पोरा के साथ HADR इनिशिएटिव भी लिख सकते हो, वैक्सीन मैत्री. ठीक है, और ये आपके करस्पॉन्डिंग इशू आ सकते हैं इसमें. ठीक है, ये क्लियर. देन यू कैन गिव दी वे फॉरवर्ड. जैसे फर्स्ट मेक अ पॉलिसी. पॉलिसी का नाम कोई भी दे दो. कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया अफ्रीका ग्रोथ स्ट्रेटेजी 2025 टू 2035. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव और सिंपली इंडिया अफ्रीका ग्रोथ स्ट्रेटेजी 2025 टू. या फिर इंडिया अफ्रीका राइजिंग स्ट्रेटेजी, इंडिया अफ्रीका डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. ठीक है, या फिर इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी. ठीक है, देन एडहेरेंस टू. यस, मोदी जी ने जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे, 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स गिवन बाय PM मोदी. ठीक है, थर्ड ये कीवर्ड याद रखो, सस्टेन्ड डिप्लोमेसी. रेगुलर annual summits. Yeah, because the last India Africa summit happened in I think 2018. उसके बाद हुआ ही नहीं है. ठीक है, ये. Then you can conclude. Conclusion में you can use the quote of PM Modi. ये क्लियर है. यस, यहाँ अभी इसी साल अफ्रीका पे क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट ईयर आने का कोई स्कोप नहीं है. सो आई विल जस्ट शो द मॉडल आंसर and after the lecture I will share the model answer also. So this कि यहाँ पे rather than the quote of PM Modi, what I have added is I have just rephrased the question. Africa is emerging as the next frontier of global growth, driven by its demography, market, and natural resources. Okay, so next frontier of global growth, driven by demography, market, natural resources. Okay, then Asia's growth story, key share in global GDP from 25% to 45%. ठीक है, आपको अगर डेटा पता नहीं है तो शेयर इन ग्लोबल GDP नियरली डबल्ड इन लास्ट 3 डिकेड्स. ठीक है, सेकेंड इंट्रा एशियन ट्रेड अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स. ठीक है, दैट इज इंट्रा एशियन ट्रेड. नहीं भी याद है तो भी चलेगा, बट ये तो याद रखो. अगर डेटा पता नहीं है तो आर्टिकुलेट ऐसे करो कि शेयर इन ग्लोबल GDP रोज और नियरली डबल्ड in last 3 decades. Then demography, Asia houses 60% of global population with India's median population 28. Okay, then in terms of technology, India's IT sector, China's manufacturing, and ASEAN digital economies. Okay, then success of multilateralism, ASEAN, RCEP, ADB.
ठीक है, या फिर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. Then next few decades belong to Africa. So demography again, 25% of the population with youngest median age. अगर डेटा नहीं है, ठीक है, so youngest median age by 2050, इतना ही लिख दो चल जाएगा. सेकेंड, रिसोर्स, rich reserves of critical minerals vital for the energy transition. Then Africa projected to grow at 4% annually, IMF. ठीक है, अगर वो भी नहीं आप डेटा याद है तो अफ्रीका इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट, एंड ब्रैकेट में यू कैन राइट IMF. ठीक है, देन रीजनल इंटीग्रेशन. अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया कनेक्ट्स 1.3 बिलियन पीपल अक्रॉस 54 नेशन. अब ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दिस. देन ग्रोथ ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विद 30% CAGR. इंडिया का कितने CAGR से बढ़ रहा है? We have covered that in e-governance. India's digital economy is growing at 20% CAGR, whereas Africa's is going at 30% CAGR. Okay. Then Indian influence in Africa examination, dimension नहीं लिखा तो भी चलेगा, strength weakness बस लिखना है. This is for your understanding. Economic, India is the third largest trading partner. Trade number नहीं मत लिखो. Weakness में trade imbalance, Indian imports are more than exports, and limited diversification. लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन का हर कंट्री में आएगा तो बियॉन्ड एनर्जी एंड मिनरल्स. देन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर मोर देन 54 कंट्रीज है, उनमें से एक नंबर पकड़ लो, मोर देन 30 कंट्रीज और मोर देन 40 कंट्रीज. ठीक है, देन ITECN पैन अफ्रीका ई नेटवर्क फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, इतना ही लिखो. ठीक है, देन इसमें इशू डिलीवरी डेफिसिट, delayed project execution. Then health and pharma supplies over 50% of Africa's pharmaceutical medicines. Vaccine Maitri. Again, with respect to this issue is the quality issue. Recent death after Indian cough syrup. Right. Then maritime security cooperation through Sagar and IORA for anti-piracy and maritime domain awareness. ठीक है, उसके इशू क्या है? डिफेंस, लिमिटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेशन. देन पॉलिटिकल और मल्टीलैटरल, एडवोकेट इंडिया अफ्रीका's role in UNSC reforms, and India advocated for African Union's inclusion in G20 under India's presidency. China's BRA presence overshadow Indian. ठीक है, then India also hosted Voice of Global South. Cultural and diaspora, more than 3 million diaspora in Africa. And then for diaspora, you don't have the less structured या फिर less institutionalized public diplomacy. So जो diaspora diplomacy होती है उसे public diplomacy भी कहते हैं, which is less institutionalized in India. Okay, so we don't have the mechanism or the department through which we ensure the sustained diplomatic relations with the diaspora. ठीक है, रादर हम क्या करते हैं, मोदी जी जो प्लेन में जाते हैं उसके पीछे और एक प्लेन होता है, यही से लोग लेके जाते हैं और वहां पे वो क्या कहते हैं, वो झंडा लेके वो रास्ते में आते हैं. ठीक है, सो वी डोंट हैव द सस्टेन्ड और द इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी विद द डायस्पोरा. ठीक है, दैट. देन अगेन इंडिया अफ्रीका ग्रोथ स्ट्रेटेजी, expand diplomatic footprint, increase frequency of high level summits and ministerial dialogue. या फिर इसमें वो भी आप लिख सकते,
बायलैटरल नहीं है, ये पूरे अफ्रीका के साथ है, तो हर एक कंट्री के साथ 2+2 मिनिस्टेरियल नहीं हो सकता, ठीक है। तो रादर देन दैट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई लेवल समिट्स एंड मिनिस्टीरियल डायलॉग्स, ठीक है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सपांड ITEC 2.0 in emerging fields like climate, AI, and fintech. Yeah. In the conclusion, use Modi's quote. कि our partnership is beyond strategic. It is human-centric, empowering, and future-facing. या फिर India-Africa relation should be guided by the 10 principles given by Modi. That also you can use as the conclusion. ठीक है, ये क्लियर है? यस, उदय। सर मुझे वो समझ में नहीं आया, आपने क्या एजेंडा क्या बोला, डिप्लोमेसी? कुछ नहीं, वो जोक था, छोड़ दो। That was not this related to the answer. आंसर समझ आ गया? हाँ यस। Then बस है, okay. Is it understood this particular answer? Yeah, इसको बस we have to bifurcate the answer into parts. Few decades where India's growth story. Next you are expected to be Africa and examine बोला है तो strengths, weakness both. ठीक है, no need to write this answer. Then next question is with respect to again it is again with respect to the Africa only. Okay, so we'll do this. Critically analyze evolving diplomatic, economic, and strategic relations with Central Asian republics, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. Okay, again, it is a 10 marker question. Yes. So focus upon the directive and second keywords in the question. So how would you structure this particular answer? Who wants to try? Yes, Nandini. Good evening, sir. Mm-hmm. Sir, first of all, we will give introduction about India and Central Asian republics, Mm-hmm. and then diplomatic relations, economic and strategic relations. Mm-hmm. Then we will highlight the significance in regional and global geopolitics, Mm-hmm. and then challenges and way forward. It is a 10 marker question. You have just 2 pages. Then we can go with way forward. Okay. Okay. Who else wants to try? Yes, Tejaswini. Yes, so sir, as it is a 10 marks question, so we can have in like one heading only for that. Like first we'll go for the introduction and then we'll make a heading like diplomatic engagement like between India and Central Asia. And like one heading will be like economic relationship between India and economic and strategic relationship between India and Central Asia. Okay. Okay. What else? And then sir, I think yeah, we should write also increasing significance of Central Asia republics. Like it isn't the question. Okay. So significant, yeah. And yeah, it's challenges then way forward. ठीक है। So यहाँ पे rather than this, yeah, first of all, इन्होंने कहा है critically analyze. So at least you should know कि 50-50% weightage should go to that. That is India's relationship and the criticism. Both will carry equal weightage. ठीक है, so 2 demands यहीं पे हो गए. Third demand that they have given
सिग्निफिकेंस इन रीजनल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, सो 3 हेडिंग आपकी ऑलरेडी आ गई है इन 10 मार्कर क्वेश्चन। नॉर्मली देयर आर 2 हेडिंग्स। ठीक है, सो इन सच क्वेश्चंस व्हेन यू हैव ऑलरेडी 3 हेडिंग्स, ठीक है, वहां पे वे फॉरवर्ड यू हैव टू स्किप एंड यू हैव टू कंक्लूड विद द वे फॉरवर्ड फर्स्ट। Okay, if it is a 10 marker question. Secondly, अब question का alignment in this particular one, rather than going in line with this statement, how we would start it. The introduction will be same, which we have used this in last question that we discussed yesterday on Central Asian Republic, the heartland theory of Mackinder. ठीक है. Second, first we'll highlight the significance. Can ye, as this is the implicit demand, they haven't asked what is the significance or explain the significance. That is in the question, so it is implicit. We'll briefly just give the point. Geopolitical, it is area of great game between US, Russia, China, इंडिया का भी डाल दो। ये इंडिया कुछ नहीं रोल है इंडिया का, बट डाल दो। सेकंड, with the perspective of geoeconomics in terms of energy. Again, so critical mineral reserves. Then uranium in Kazakhstan. Kazakhstan is the largest exporter of uranium. Geoeconomic perspective से, ठीक है, connectivity perspective से, you have international north-south transport corridor or part of China's BRI project. Then defense and security perspective से, कि Central Asia acts as a buffer against terrorism. Okay, so from Afghanistan, it prevents terrorism reaching into the Eastern Europe, Russia, etc. Okay, so it acts as a buffer against terrorism. ठीक है, अब चौथा पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, तीसरा सफिशिएंट। या फिर then significance after that, India's engagement. ठीक है, सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक। सो डिप्लोमेटिक मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इवोल्यूशन वगैरह इसमें नहीं देना है, वी कैन डायरेक्टली हाईलाइट दैट। ठीक है, द प्रेजेंट स्टेट। अब 10 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, सो इंडियाज एंगेजमेंट। अब इसके आगे इफ यू वांट यू कैन प्रोवाइड अ स्टेटमेंट कि पोस्ट डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, यूपीएससी इतना दिमाग यूज नहीं करता है क्वेश्चन फ्रेमिंग में कि आप ज्यादा मतलब उस पर इतना ध्यान दो कि अब इवोल्यूशन भी बताना है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है, उनका सिग्निफिकेंस भी बताना है। 10 मार्कर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो उसको इवोल्यूशन आप यहीं पे रख दो, यू एंड इट हियर। एक क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ कैसे एडिटोरियल का सब हेडिंग उन्होंने वैसे का वैसे उठाया है इस साल के क्वेश्चन में। So in terms of diplomatic, so in diplomatic is always at 2 levels, 3 levels actually. One at the policy level. So India has connect Central Asia policy. Second, at institutional level. तो institutional level में India Central Asia annual summits
and through SCO. ठीक है, थर्ड होता है आपका ट्रैक टू डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, या फिर आपका कल्चरल डिप्लोमेसी वगैरह। ठीक है, उसका आपके पास अगर कोई पॉइंट होगा तो दैट यू कैन ऐड। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में फर्स्ट तो ट्रेड, इंडिया सेंट्रल एशिया ट्रेड इज अराउंड 3 बिलियन। अगर ट्रेड भी पता नहीं है तो दैट्स फाइन, यू कैन सिंपली मेंशन दी सेक्टर्स। अब इंडिया कौन से सेक्टर्स में मेजोरिटी इंडिया का ट्रेड होता है? फार्मा, आईटी, ठीक है, एंड एनर्जी। ठीक है, सेकंड की लाइन ऑफ डिप्लोमेटिक में ये भी लिख सकते हो आप, पीएम विजिटेड ऑल 5 Central Asian republics, highlighting their importance. Yeah. Then line of credit for developmental projects. अब इन्होंने डायमेंशन 3 ही दिए है, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक। ठीक है, तो इसमें आप कनेक्ट थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट में कैपेसिटी बिल्डिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, थ्रू ITEC। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक। सो स्ट्रेटेजिक में सबसे पहले तो इंडिया is considered as balancer to China everywhere. ठीक है, so that's why India has been central to the Indo-Pacific strategy of all the global powers. So similarly, Central Asian republics view India as counterbalance to China. And yes, ठीक है, that second, विद इन स्ट्रेटेजिक में आपका सिक्योरिटी भी उसी में डाल दो, सिक्योरिटी डायमेंशन। सो कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग अंडर SCO रैट्स मैकेनिज्म। ठीक है, देन थर्ड, इंडिया और एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी इज ऑल्सो दी स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट। इसमें एक तो अब ये कर सकते हो थ्रू तापी पाइपलाइन। सेकेंड, with respect to this India Kazakhstan civil nuclear deal। ठीक है, and last aspect of the security is the defense security कि India has its only overseas base in, it is in Kazakhstan। So, air base Tajikistan। ठीक है, then you highlight the challenges। So challenges again, geopolitical terms में China's deep pocket diplomacy and debt trap diplomacy through BRI। ठीक है, second की with respect to the connectivity, lack of direct connectivity and US sanction on Iran। ठीक है,
limiting access to Chabahar port. Third, with respect to the defense and security, so limited this joint exercises and defense cooperation. ठीक है, that then क्या हो गया, जियोपॉलिटिकल हो गया, डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मेजरली इन एनर्जी एंड दिस फार्मा. ठीक है, और इंडिया ट्रेड इज और China's trade with Central Asia is more than 3 times that of India. ठीक है, that यही आपके अराउंड, और इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान क्रिएटिंग द सिक्योरिटी रिस्क्स, ये 5 पॉइंट आपके वही आ जाएंगे. ठीक है, एंड देन कंक्लूजन में सस्टेन डिप्लोमेसी थ्रू frequent high level visits and regular India Central Asia summits. ठीक है, सेकेंड वही की improving or early completion of connectivity projects like international north-south transport corridor. ठीक है, then what else you can write? Yes, free trade agreement with Eurasian Economic Union. ये 3 पॉइंट्स अब लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्लियर है. तो इसका अगर आप मॉडल आंसर देखोगे, here also, and in this you have the scope to use the map also, जो हमने सेंट्रल एशिया के कल वाले क्वेश्चन में किया था. that map also you can add. First significance and later doing critical analysis, because वो थोड़ा सा फ्लो में आता है. ठीक है, कि फर्स्ट यू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रीजन, देन यू हाईलाइट इंडियाज रिलेशंस, देन यू हाईलाइट द चैलेंजेस. तो वो थोड़ा आंसर आपका फ्लो में लगता है, इसलिए वी हैव चेंज्ड. यस, तो region of Central Asia is located in heart of Eurasia and denoted as heartland by Mackinder. It connects Europe, West Asia, South Asia, Russia. Okay, with respect to the energy hub, it Turkmenistan gas, Kazakhstan uranium and oil. Strategic location, bridge between Europe, Russia, South Asia and China. Okay. Third, with respect to the security buffer, act as buffer against terrorism, extremism. Okay, an area of great power competition, China, Russia, US rivalry. India's engagement diplomatic connect Central Asia policy based on 4 C's: commerce, connectivity, consular and community. And then India Central Asia summits, SCO membership, economic 3 billion trade, energy, IT, pharma. Okay, and line of credit for development projects in infrastructure, IT, agriculture. इंडिया, ये हमने कल किया था. ठीक है, वही पॉइंट आएगा. देन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म थ्रू SCO रैट्स. ठीक है, इंडिया ऑपरेटेड एनी एयर बेस ताजिकिस्तान. इन्वेस्ट वाया ONGC विदेश इन कजाकिस्तान. ठीक है, ये, या फिर इसमें और एक आपका जो पॉइंट आएगा, SCO considers India as, sorry, Central Asian republics consider India as counter balance to China. ठीक है, then challenges, connectivity gap due to lack of direct access, then China's dominance under BRI and Russian influence in security, then instability in Afghanistan affecting the corridors, low trade volume
and implementation delays in projects like TAPI. UN sanctions on Iran hinder Chabahar International North-South Transport Corridor route. अब ऑलरेडी यहाँ पे आपके 5 और यहाँ पे 4, 9, 15 अराउंड 18 पॉइंट्स आपके यही हो गए. You won't be having any space for way forward. So you add your way forward in conclusion. So early finalization of FTA between India and Eurasian Economic Union and air corridors can help realize or can strengthen India-CAR relations. ठीक है वैसे when you will write the answers, यहाँ पे you write 3 points. And those are also should be very brief using diagram. Okay. Then here in economic you write only 3, strategic में you write 2. So 2 plus 3 5 plus 2 7 points यहाँ हो जाएंगे and यहाँ पे 5 लिखो 12 and you can conclude. ठीक है ये समझ आ गया? Yes, doubts? Yes, Tavish. Yeah, sir, as the question is critically analyzed, so I was just also thinking that we should like highlight challenges as well in these three terms like diplomatic, economic, and strategic. And so like You can, but वो उतना scope आपको रहना चाहिए. अगर आपको वैसे ही करना है तो you can simply make a table. But again वो उतना ज़्यादा relevant नहीं होगा. हर point का separate या फिर challenge देना. You can do that also. You can make a table. ठीक है? कि critical analysis of India's engagement can be your heading, and under it you can simply write the table. और उसमें फिर segregation मत करो. You can simply write the points and challenges. ठीक ठीक है, है वैसे भी you can do. ठीक ठीक है? Yes. ये clear है? So you write this answer in 7 minutes. Because after this, जो questions आने वाले हैं, those are very interesting because that will be on the this. ये तो ठीक है, but अब जैसे मैं कह रहा था कि how UPSC frames the questions. ठीक है ऐसा कोई वहाँ आइंस्टाइन बिठा के वो क्वेश्चन नहीं फ्रेम करते. सी दिस क्वेश्चन इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स. ठीक है एंड इलैबोरेट. इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉम्पैक्ट एंकर्ड इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स. ठीक है द हिंदू 26 मई 2025. ठीक है ऐसा मतलब ठीक है. इवन हम जब फ्रेम करते हैं क्वेश्चन एटलीस्ट हम ऑर्डर तो चेंज करते हैं कि एंकर्ड इन को डेवलपमेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट. ठीक है यूपीएससी वाले वो भी नहीं करते. तो माय पॉइंट इज कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल उसको लेना नहीं है. देन सेकंड थिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू द आईआर. जो मैंने कहा था आईआर के अराउंड 32 क्वेश्चन है, उनमें से एटलीस्ट 21 या 22 क्वेश्चंस आई कैन डायरेक्टली पॉइंट आउट द एडिटोरियल्स फ्रॉम वेयर दे हैव पिक्ड. ठीक है तो द पॉइंट इज इन आईआर करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है यस नाउ यू राइट दिस आंसर इन 26 में May was, I think, it was when the prelims was on the same day, ना? ठीक है तो देखो the great game of UPSC. क्वेश्चन जिस दिन आप न्यूज़पेपर मिस करोगे उसी दिन का क्वेश्चन पूछा है. ठीक है okay. So write this particular answer in 7 minutes. Then we'll start with the great powers. That is very interesting. It's 5:57. You have time till 6:05. Coming to the next question, which is this is also the important one. ये तो
इसी साल आया है कि इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. अब इसमें भी what you have to do, 3 dimensions they have already given, so you have to classify them under the 3 dimensions. ठीक है, अब as this question is specifically with respect to the India-Africa relationship, ठीक है, so you can start with the quote of PM Modi या फिर जो सेम इंट्रोडक्शन हमने अफ्रीका का प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि अफ्रीका इज द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है, विथ 30% CAGR इन डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ. So same data based introduction also you can give or you can use the quote. Then यहाँ पे तो elaborate बोला है, so that means our the philosophy of 80-20 or 70-30. So maximum weightage will go to the digital partnership. ठीक है, अब इसमें मैंने focus on mutual respect. ठीक है, so mutual respect is South-South cooperation based upon equality, non-conditionality, mutual benefit, जो हमारे पंचशील के प्रिंसिपल्स है. या फिर वन मोर यू कैन ऐड प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी. ठीक है, अब ये थोड़ा सा आंसर आपको कंपैरिजन टर्म्स में लिखना है. while India's digital partnership is based upon mutual respect, co-development, long-term partnerships, whereas the approach of other countries like China or the USA, ठीक है, तो जैसे अगर आपको कंपेयर ही करना होगा चाइना इंडिया का, इफ द क्वेश्चन कम्स, China's policy is, you can term it as the neo-colonialism या फिर extractive, where China wants to extract maximum from those countries, be it mineral resources, be it their natural resources, or be it their financial resources. Whereas the India's approach is guided based upon the principle of one is Vasudhaiva Kutumbakam, and second, developmental partnership. या फिर साउथ साउथ कोलैबोरेशन. ये याद रखो बस डिफरेंस. ठीक है, सो साउथ साउथ कोऑपरेशन बेस्ड अपॉन इक्वालिटी, नॉन कंडीशनलिटी, म्यूचुअल बेनिफिट. अनलाइक चाइनीज डिजिटल सिल्क रोड, इंडिया प्रोवाइड्स लो कॉस्ट एंड इंटरऑपरेबल सॉल्यूशंस. ठीक है, नेक्स्ट कि लाइक जैसे सेंट्रल एशिया का भी कहा था कि दे with respect to the Africa, if they admire China but they want to be India. ठीक है, तो ये अब दिस कोट इटसेल्फ यू कैन पुट, याद पर शशि थरूर, मैंने वो कोट नहीं दिया है, बट व्यूज इंडिया एज द पार्टनर इन कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉट अ न्यू कॉलोनियल एक्टर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय शशि थरूर, हमारा स्कॉलर भी आ गया. देन co-development through technology capacity building, pan Africa network in tele-education and telemedicine. Then India's Aadhaar, UPI, कोविन, डिजिटल लॉकर सिस्टम्स, या फिर इंडियाज, इसको कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI, या फिर इंडियाज DPI सर्व एज द मॉडल फॉर अफ्रीका. एग्जाम्पल UPI in Namibia. यही एग्जाम्पल आप दे सकते हो. नेक्स्ट प्रोग्राम इज द ITEC प्रोग्राम. ट्रेन अफ्रीकन प्रोफेशनल्स इन ई-गवर्नेंस, AI, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, जो भी डिजिटल इकोनॉमी के रिलेटेड पॉइंट्स है, ई-गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, AI, फिनटेक, ब्लॉकचेन, ठीक है, वो सारे इसमें
आप डाल सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स, तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, या इंस्टीट्यूशनलाइज डिजिटल कोऑपरेशन। अब ये वाला पॉइंट भी पहले वाले में ही था, अफ्रीका वाले क्वेश्चंस में। देन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर ICT hubs and innovation centers, सिमिलर पॉइंट्स है, ओनली थिंग कि डिजिटल पार्टनरशिप बोला है तो आई एम एडिंग इन इलैबोरेशन, आई एम मेंशनिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है। GS2 में PM मोदी के कोट्स हेवी हो जाएंगे, हाउ टू लिमिट इट, तो उनको कम बोलने को बोलो थोड़ा। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी मैं दे रहा हूँ, बट इन द एक्चुअल व्हेन यू विल बी राइटिंग you won't be able to recall these many. ठीक है। सो इन मैक्सिमम टाइम्स यू विल बी जस्ट रिफ्रेजिंग द क्वेश्चंस और रिसेंट कंटेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन ही आप दोगे। ठीक है। वैसे देन स्टार्टअप कोलैबोरेशन अंडर डिजिटल पार्टनरशिप, जैसे डिजिटल इंडिया अफ्रीका इनिशिएटिव याद नहीं आ गया, स्टार्टअप कोलैबोरेशन अंडर डिजिटल पार्टनरशिप इन सेक्टर्स लाइक एग्रीटेक, ई हेल्थ, ई एजुकेशन। ठीक है। फिनटेक। देन अगेन एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर सपोर्ट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ट्रायलैंगुलर कोऑपरेशन विद जापान। ठीक है। देन एजुकेशन एंड स्किलिंग, IIT मद्रास कैंपस इन झंझीबार, ये भी कंट्री। उसके जो भी आपके पास एग्जांपल है वो आप ऐड कर सकते हो। देन इश्यूज वही, डिलीवरी डेफिसिट, चाइना's deep pocket diplomacy, lack of digital infrastructure in Africa, या फिर lack of sustained diplomacy, and then institutionalize वही डिजिटल इंडिया अफ्रीका फोरम, या फिर कि इंस्टीट्यूशनलाइज नॉट दैट, डेवलप इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप 2030। ठीक है। जैसे हमने इंडिया अफ्रीका ये दिया था, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजी 2030 लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे डिजिटल स्ट्रेटेजी 2030। ठीक है। देन अब चाइना की डीप पॉकेट डिप्लोमेसी का एड्रेस करने के लिए यू कैन एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, एंड थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वही। ठीक है। वी वोंट बी यूजिंग द रिपीटेटिव पॉइंट्स। अफ्रीका पे एक ही क्वेश्चन आएगा, अफ्रीका पे दो क्वेश्चन उनके नहीं आएंगे। ठीक है। सो एक में आप लिखो डिलीवरी डेफिसिट, दूसरे में लिखो डिले इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। वैसे आपको रिफ्रेश करना होता है। अब इशू सेम है तो सेम ही लिखेंगे ना, दूसरा क्या लिखेंगे? व्हाट कैन यू डू? देन डिजिटल पार्टनरशिप रिफ्लेक्ट न्यू मॉडल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी, ऐसे आप कंक्लूड कर सकते। ठीक है। In this answer also there is not much, only thing you require is the facts। ठीक है। ये ठीक है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट ईयर ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, because we have अफ्रीका पे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आएगा। this we will be writing, energy security constitutes dominant kingpin of India's foreign policy and is linked with India's overarching influence in Middle East countries. How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in coming years? Yes. So who wants to give me the structure of this particular answer? Read again. Again, you have to divide it into the parts for the implicit demand. Yes, Gautam. Wait, Hima. Someone new is there. Good evening, sir.
Yes, So the implicit demand would be energy security as dominant kingpin. good. Introduction, rephrasing the question, and then Hmm. implicit demand, energy security as dominant kingpin, and then India's influence in Middle East countries. Hmm. That is also implicit demand. The main demand is integrating energy security with India's foreign policy, and So then basically, challenges, hmm, and then way forward, and then conclusion. no, how would you integrate means way forward only, no? Oh, yes, sir. Right? See, always जैसे मैंने कल भी कहा था कि when you read the question, just think from the three perspective, whether they are asking significance, whether they are asking issue, or whether they are asking way forward. ठीक है, beyond this कोई dimension बचता ही नहीं है. It will be all about these three. So this dominant kingpin of India's foreign policy means significance of India's or significance of energy security in India's foreign policy. ठीक है. Second, influence in Middle Eastern countries. Yeah. And then how would you integrate this is way forward. Sir, so should we skip challenges in this question or? Now we will integrate the challenges, but we will articulate it under this only. Okay, Why okay, so energy security is important? Because the geopolitical risks, the war and the instability in the West Asia, because of the connectivity risks in terms of जो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट आएंगे कि पॉजिटिव में इंडियाज एनर्जी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल्ड. Second, 85% of energy needs are met through the imports. Then geopolitical risk, then connectivity risk. Because of that also, energy security is significant aspect of India's foreign policy. Right? okay, So sir. we articulate it in that way, and we will add it under this heading. Okay? Okay, sir. This is way forward they have asked. And as way forward is explicit demand, first we'll think whether we can classify it under short term and long term. So energy security ka ek question, I think we did it yesterday also on the West Asia itself. Right? Same question tha. There also we classified under the short term measures and long term measures. So here also we'll do the same. Yaha dominant kingpin of foreign policy. Why it is dominant kingpin? So first of all, from geopolitical perspective, the instability. Okay. Example, instability in West Asia can lead to increase in the energy prices, impacting India's current account deficit. Right? Don't write, just listen. You have to write this answer from the model also. Just listen. Second, from geo-economic, India's energy demand is expected to be doubled by 2040, and 85% oil this demand is met through imports. Okay. Connectivity perspective say vulnerability of this or we call it as the choke points. Recently, Iran blocked the Strait of Hormuz for few days with during the war with Israel. So those choke points, जो भी आपके states होते हैं, right? That then from defense and security perspective से तो नहीं आएगा यहाँ पे, या फिर and multilateralism से भी नहीं आएगा. तो इन्हीं तीन perspective से आपके points आएंगे. यही चार points हैं. ठीक है? These then because of this integrating
यहाँ पे if you want you can add this India's influence in Middle East countries. ठीक है, तो इसमें मेजरली आपके देर आर, so geopolitical geostrategic is one. So in terms of influence, there are three axes in Middle East: Israel, GCC bloc led by Saudi Arabia, Sunni bloc जो है वो, and Shia bloc led by Iran. तो उसमें इन्फ्लुएंस में आपको दिखाते हुए यू कैन राइट GCC एंड ईरान. ठीक है, बट ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन कम टू दी इंटीग्रेटिंग एनर्जी सिक्योरिटी इन फॉरेन पॉलिसी ट्रांजेक्टरी. इसके पॉइंट्स हमने कल ही किए. पहला तो शॉर्ट टर्म मेजर्स, what were the short term measures that we discussed yesterday? One is the diversification. So importing from the US, Russia, Venezuela. What else were the short term measures that we discussed? Diplomatic negotiations, okay. Rupee, real, yes. Okay. So rupee, real trade mechanism to counter US sanctions on Iran. Right. Third, green transition will come in long term. मुझे short term चाहिए, which can be done immediately. ठीक है. Increase strategic reserves. Fourth, protection of the maritime routes नहीं बोलना है. Important sea lanes of communications or sea lanes of trade. And choke points. ठीक है. This then अब इसमें diplomatic initiatives you can talk strengthening energy and strategic relations with Saudi and UAE. Yeah, Saudi, UAE, Qatar भी बोल सकते हैं, but India has the strategic partnership agreement with Saudi and UAE. Okay, इन दो कंट्रीज के साथ किया है. What else? ठीक है, इतने बस है. कितने हो गए? 5 हो गए यहाँ पे. And then long term measures. तो एक तो आपका आएगा ग्रीन ट्रांजिशन. ठीक है. सेकंड कि आप ये this point I got today while reading the editorial. This is very there are few terms. You remember those? One is the near shoring. ठीक है, near shoring मतलब कि rather than being dependent on them, okay, you near shore your energy projects. ठीक है, near shore मतलब क्या है? नेबरहुड में. तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स आपके नेबरहुड में स्टार्ट करो. जैसे एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल. ठीक है, इसको कहते हैं नियर शोरिंग. सेकंड टर्म फ्रेंड शोरिंग.
ये आपका यूज होगा, इस वाले क्वेश्चन में नहीं होगा, बट one issue in global power is dynamics is the weaponization of supply chains by China. We discussed. तो उसका counter is friend shoring. So if you want to reduce your dependence on China, you go for friend shoring. That is, you shift manufacturing base to the friendly countries. उसका example, Apple manufacturing in India. ठीक है, so you shift your manufacturing base to the friendly countries. That is friend shoring. ये याद रखना। इसमें भी फ्रेंड शोरिंग, सॉरी नियर शोरिंग। ठीक है, सेकंड अब ये एनर्जी सिक्योरिटी पे है, तो एनर्जी सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट आपका हो गया, एग्जांपल इसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, नेपाल। सेकंड एस्पेक्ट इज दी न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, आपके एनर्जी के जो भी एस्पेक्ट्स है, ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, उनके आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तो रिव्यू न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ एंड एटॉमिक एनर्जी लॉ। ठीक है, टू एनहांस एफडीआई इन न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, दिस देन आपका ग्रीन ट्रांजिशन तो हो गया। नेक्स्ट कि टैप ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मिडल ईस्ट सोवरिन फंड्स फॉर इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन। ठीक है, these इसके बाद इफ यू वांट कि को एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो हमने सेंट्रल एशिया में किया था, एग्जाम्पल ओएनजीसी विदेश एक्सप्लोरेशन सेंट्रल एशिया, और ओएनजीसी विदेश इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, दैट लास्ट you can also talk about institutional aspect or institutionalize energy diplomacy. How can you institutionalize energy diplomacy? कि create energy diplomacy wing in ठीक है, these इसके बाद भी अगर आपको और पॉइंट्स इसमें लाने हैं तो यू कैन टॉक अबाउट की एनर्जी एफिशिएंसी डोमेस्टिकली, वो भी ठीक है। ठीक है, वन लेवरेजिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट, एंड द विजन ऑफ वन अर्थ वन सन वन ग्रिड। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? हम्म, हम्म, ये समझ आ गया? तो यहाँ पे भी कितने पॉइंट्स आपके हो गए? 3,
6 7, यहाँ पे 5 12, यहाँ पे 4 16 17 पॉइंट्स आपके आ गए। ठीक है, this and in conclusion again, thus energy security is linked with India's great power ambition या फिर विश्व गुरु ambition and vision of विकसित भारत 2040। ठीक है, ये क्लियर है? Doubts? Yes, Vasundhara. So, in the beginning, you had said that we need not mention India's overarching influence in the Middle Eastern countries. क्यों? मतलब वो space constraint की वजह से? स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से आज सच नहीं, बट उसके जो हमारे पॉइंट्स है ऑफ द एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस है नहीं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, सभी मतलब इंडिया हैज द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ईरान, इट हैज विद यूएई, इट हैज विद सऊदी। ठीक है, बट इंडिया को वहां कोई पूछता भी नहीं। ठीक है, किसने पूछा है? तो जैसे इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पीस प्रोसेस ऑफ द पैलेस्टीन, इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व और विथ रिस्पेक्ट टू द ईरान भी सैंक्शंस कम करने के लिए या फिर वहां पे भी कोई मीडिएटर रोल सच नहीं है, तो कोई पूछता नहीं है। ठीक है, वो ईरान के लोग अगर छोड़े तो बाकी लोग आते भी नहीं है इंडिया में, हार्डली कोई आता है, उनका डिप्टी मिनिस्टर या फिर ऐसे कोई आता है। ठीक है, तो ये ख्याली पुलाव है कि इंडिया का ओवर आर्चिंग इन्फ्लुएंस है, कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अपना मोस्टली इन वेस्ट एशिया वी हैव द ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी एट बेस्ट। ओके, दे वैल्यू इंडियन मार्केट, दैट्स इट। ठीक है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। पहले था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस और इंडिया ट्रेडिशनल पॉलिसी। ठीक है, traditional West Asian policy was based upon 3 pillars. One was non-alignment. Okay. Second, Arab socialism. Okay. And third, मैं भी भूल गया, non-alignment, Arab socialism, South-South cooperation. ठीक है, ये 3 पे पहले था, अभी इट्स कंप्लीटली ट्रांजैक्शनल। So you can write India's overarching influence in Middle East countries. So उसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो। कि growing the depth and diversity in relationship with Israel is strategic partnership with Saudi Arabia and UAE. Third, this India's involvement in Chabahar project in Iran. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, उसमें डायग्राम बनाए। ओके सर, एंड इसमें जो 4th पॉइंट था लास्ट में, अगर मतलब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मिडिल ईस्ट, नीचे लॉन्ग टर्म मेजर्स में 4th वाला पॉइंट। सो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मिडिल ईस्ट सोवरेन फंड्स, ये मतलब किस तरह से होगा? आई एम नॉट। They will invest in the Indian infrastructure. जैसे this UAE sovereign fund has invested, the India UAE has signed, under which UAE will be investing 75 billion in India. Like some MOUs. MOUs, yes. Okay, sir.
ठीक है। Yes. और इसमें फिर ट्रेडिशनल पॉलिसी भी आप लिख सकते हो, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड साउथ कोऑपरेशन, ये आप लिख सकते Sir, also in the present context, Iran is tending towards China and Russia. हो। So, तो वो point भी include करना चाहिए. And recently, I think कुछ ऐसा पाकिस्तान का कुछ NATO वगैरह वैसे अब तो कुछ नहीं है, but वो बीच में आया था ना वो न्यूज़ में सऊदी Pakistan अरेबिया के Saudi साथ. signed an agreement हाँ, under which it was agreed that any attack on Pakistan will be attack on Saudi. yeah, but it failed, but still मतलब Failed as such नहीं है, but पाकिस्तान को वहाँ इंडिया से कम भाव वहाँ पे मिलता है। हाँ, वो पाकिस्तान आर्मी is treated as the mercenary by the Saudi and the GCC. ठीक है, पाकिस्तान को वहाँ खाने भी नहीं देते हैं। तो मोदी जी जाने के बाद एटलीस्ट डिनर तो होस्ट करते हैं, पाकिस्तान वालों को उतना भी नहीं करते हैं वो। ठीक है। सर ऐसा थॉट के वो भी इंक्लूड करना चाहिए क्या पॉइंट्स? नहीं, जरूरी नहीं है, अगर वेस्ट एनर्जी के कंटेक्स्ट में नहीं है ना वो। हाँ, इंडिया वेस्ट एशिया ओवरऑल रिलेशंस अगर पूछे तो दैट विल कम एज अ चैलेंज अंडर जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट। यस सर, वैसे गॉट इट सर, थैंक यू. ये क्लियर है? यस उदय। Uh, yes, sir. Yeah, in my question is not on this, like the overall influence part you were talking about, India's influence, that like the soft power part, like most of the officials in UAE and all, they are like in the Indian, I mean, there are many immigrants over there. So that part, if there, can we include in the influence part? लिख सकते हो रेमिटेंसेस फॉर द इंडियन डायस्पोरा। And they also work in the government of UAE and हाँ, तो ये प्यून की नौकरी करते हैं वो, सीनियर लेवल पे तो नहीं करते हैं वैसे। वो मत लिखो कि वर्क इन द गवर्नमेंट, रादर यू सिंपली राइट अबाउट दिस इंडियन डायस्पोरा एंड द रेमिटेंसेस। ठीक है। यस, बट वो अगेन नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ द एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन इफ यू रीड कि एनर्जी सिक्योरिटी इज लिंक्ड विथ इंडियाज इन्फ्लुएंस इन मिडल ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई पॉइंट होगा तो लिखना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप किया था, बिकॉज वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स या चाबहार वो एनर्जी सिक्योरिटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। राइट, दैट्स व्हाई आई स्किप दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, इनमें से कोई भी पॉइंट एनर्जी डिप्लोमेसी या एनर्जी सिक्योरिटी से नहीं है। क्या वैसे इफ यू सी you have to write this particular answer. The model answer of this is, so here, rather than rephrasing of the question, we will start with the data-based introduction. India is world's third largest energy consumer, importing over 85% of crude oil and 55% of natural gas. ये डेटा याद रखो, एनर्जी सिक्योरिटी में आपका क्वेश्चन आने वाला ही है। इफ नॉट इन GS2 इन IR, देन इन GS3 में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड नियरली 60% इज इंपोर्टेड फ्रॉम मिडल ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, देन एनर्जी सिक्योरिटी इज डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी ड्यू टू वन, India's energy demand is projected to be double by 2040। ठीक है, इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। सेकंड, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, Israel Iran tension, Strait of Hormuz threatens supply chains, so because of that also it is also important kingpin. So negative points also we are providing under it. Then price volatility, fluctuating global oil prices
widens India's current account deficit. Then US sanctions on Iran, Venezuela, Russia limits India's diversification options. Next, China's aggressive investment in overseas oil fields and LNG projects crowd out India. Example in Africa. Okay. Then infrastructure gaps, limited strategic petroleum reserves and pipelines. यहाँ पे एज एग्जाम्पल आप लिख सकते हो डिले इन तापी प्रोजेक्ट. तापी बेसिकली पाइपलाइन ही है. So because of that, energy security is dominant kingpin. Okay, next, short term and long term. So short term, diversification of suppliers, sourcing from US, Russia, Africa, Latin America. Expand strategic petroleum reserves capacity 5.3 to 10 MMT. Okay, then Chabahar and international north-south transport corridor connectivity to secure overland energy routes and bypass choke points. Okay. Then maritime and energy diplomacy. Strengthen cooperation with UAE, Saudi, Oman for securing sea lines of communication. वही keyword है, sea lines of communication या sea lanes of communication also. Okay. Then financial resilience. या फिर simply develop rupee based oil trade and local currency settlements. Example, rupee, real settlement system. Okay, so rupee based oil trade and local currency settlements. Long term measures, near shoring energy supplies and greening the Indian grid under neighborhood first policy. ठीक है, फिर से इतना भी लिखो कि नियर शोरिंग अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. एग्जाम्पल, hydropower projects in Nepal. Second, review of civil liability and nuclear damages. Civil liability for nuclear damages act या फिर review of civil liability act, sorry, nuclear liability act and atomic energy act for FDI in civil nuclear energy. Green energy partnerships, collaborate with Gulf countries on green hydrogen, solar parks, carbon capture. Okay, example, India UAE green energy corridor. Okay. Then promote India as a global hub for renewable technology and green financing under International Solar Alliance. Okay. Then energy investment, ONGC Videsh in oil and gas fields in Iraq, UAE, Russia. Okay. Then establish sovereign energy investment fund for strategic acquisitions. जैसे example is Reliance and Armaco, which is Saudi's largest oil refinery. That example, Reliance. Then critical minerals diplomacy, partner with Central Asian republics and African nations for lithium, nickel and cobalt supply chains. Okay, Central Asian Republic, Africa, and third one you can also mention Australia or Latin American countries also. वहाँ पे भी अच्छे खासे resources. Then create a energy diplomacy wing within MEA for coherent foreign policy alignment. ठीक है? This and then you can conclude with this. Energy security is not just about fuel. It is about strategic autonomy and foreign policy must secure both. अगर नहीं है तो thus energy security is essential for India's
great power ambition or Vishwaguru ambition and Viksit Bharat 20 या फिर आत्मनिर्भर भारत ऑल्सो। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ एनी डाउट्स? यस सोहम। सर सर आपने जो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स लिखा है सर वो एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या? पॉइंट्स जनरेट करने हैं? विच वन? ये सर शॉर्ट टर्म मेजर्स लिखा है ना सर? Short term and long term? यस सर। So see, whenever they ask you the short term and long term, whenever they ask you the way forward, so during that time, first you think whether we can classify it under short term and long term. Mandatory नहीं है classify करना. It is just from the perspective of presentation. ठीक है, ये क्लासीफाई करके आपको कोई 4, 2 या 3 एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाले. इट विल जस्ट मेक द इम्पैक्ट ऑफ 0.25 मार्क. ठीक है, सो whenever you are giving way forward, always think whether you can classify your points under short term and long term. If you feel I can classify and it is relevant to that question, then go for it. Otherwise, simply write the points. ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने इम्पैक्ट में भी बोला था कि थिंक वेदर यू कैन गिव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट. अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही नहीं, जैसे वोल्केनिज्म के केस में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएंगे, बट अर्थक्वेक में पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ से लाओगे? इट्स जस्ट द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कि यू हैव टू थिंक वेदर आई कैन गिव बोथ पॉजिटिव और निगेटिव. ठीक है, फिर अप्लाई योर कॉमन सेंस कि यार हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है. अगर नहीं होगा वहां पे तो नहीं देना है. ठीक है. यस, थैंक यू सर। Yes. So you start writing this because this is the last question in global power. अब यहां से आपके रियल आंसर्स ग्लोबल पावर के स्टार्ट हो जाएंगे. यहाँ से it's all about the keywords and scholars. It is completely different vocabulary. ठीक है, चलो. You first write this in 15 minutes. Sorry, in 12 minutes till 7:01. उसके बाद के आंसर्स यू विल ऑल्सो एंजॉय. अब तक अगर बोर हो गया तो आगे वाले यू आर गोइंग टू एंजॉय. यस, स्टार्ट राइटिंग एंड ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. एग्जैक्टली सेम नहीं करना. नेबरहुड विल डू एट द लास्ट. वो लिखने नहीं आंसर्स, जस्ट आई विल डिस्कस. 2 ही है उसमें. सो इकोनॉमी विल स्टार्ट फ्रॉम 10th आई थिंक. यस, tomorrow we'll finish the IR, then 1 day gap and then we'll start with economics. ठीक है, ये हो गया सभी का? Yes, okay. So now we'll be starting with the within IR, the most important thing, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जहां आपको more than facts we need the keywords. ठीक है, and scholars, and that is the emerging world order. So if you see the questions of emerging world order, yes, so global world order or the emerging world order. तो ये वाला टॉपिक अगर इसमें आप देखोगे तो यू हैव टोटल ऑफ 4 क्वेश्चंस. ठीक है, और ये रिसेंट ट्रेंड रहा है कि इस पर्टिकुलर थीम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, सो इन 2025 you have question, 24 you have question, in 21 you have
in 2019. So 24-25 दोनों साल आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि rather than the keywords, it is the rather than the facts, it is the keywords and the scholars, ठीक है। तो इसके आंसर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। So when I will finish the first answer, I will show how many editorials I have to read for this one particular answer, ठीक है। एंड इसके ये 4 क्वेश्चन कर गए तो इसके आपके अगले साल का एक क्वेश्चन तो इसी कंटेंट में बन जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, the long sustained image of India as the leader of oppressed and marginalized nations has disappeared on account of its newfound role in the emerging global order. Elaborate. Okay, this may all you have to do is divide the question into the parts. Okay, so who wants to give me the structure of this? Yes. Okay, Vasundhara. Sir, it is about a shift of India's policy from ideology to the real politics. So, after independence, India had stood as a leader of the oppressed or marginalized countries, like non-aligned movement and alignment Give me movement. the structure first, no answer. Yes, sir. So we can give a historical background in the introduction, like and rephrase it, Okay. and then we can give a heading: India as a leader of oppressed and marginalized sections, nations, and then we can give the points under it, Mm. and then the new emergent role as the global. I mean the India as in the emerging global order. So we can say that it has found a new role. So India's new role in the emerging global order. Okay. So new role in emerging global order. Yeah. Diminishing traditional image or diminishing long sustained image. It will be your heading. What will be the next heading? We can give a counterpoint that Counter- yes, sir, that still India is a leader of is considered as a leader of global South, and we can give some justifications and then conclusion. What will be the weightage of these two? 80-20 or 70-30. This will be your 70% because directive is elaborate, and this will be brief using the diagram. It is a 15 marker question, and if you see, there are only two core demands. Okay, India's traditional and emerging role. ठीक है, अब इसमें भी you have to establish the contrast. ठीक है, कि how you have to give the new role and how it is diminishing the traditional role. ठीक है, apply the same framework. So what is India's traditional role in terms of geopolitics? It advocated for non-alignment, geo-economic. It called for South-South collaboration and new international economic order under WTO, or sorry, new international economic order based upon principle of equality and justice. What else? In terms of defense and security, it called for the pacifism and peaceful negotiations.
Yeah. Or within defense and security, you also have India was the major advocate of nuclear disarmament, right? Then within multilateralism, India called for greater representation in global governance institutions, right? So that was, iska example you can give G77, where India was the leader of G77. Then new role, diminishing. So why there is a new role? Again, from geopolitical perspective, is shift from non-alignment to Strategic autonomy, multi-alignment. multi-alignment. What else? Yes. What else? So there has been the demand for inclusion in UNSC. I mean, as the UNSC member. So the reforms. It is being the India has been asking for UNSC reforms as well. ना तो वो तो फिर इसके आर्ग्यूमेंट में नहीं आएगा ना, दैट इज द कंटिन्यूड रोल, वो तो काउंटर आर्ग्यूमेंट में आएगा। अच्छा हाँ, वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टी अलाइनमेंट को ही, ठीक है। द सेकंड, द एक्टिव पार्टनरशिप्स और द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट it through SCO, BRICS, Pod, which is also the part of multi-alignment, right? And one more aspect of India's foreign policy is the strategic balancing. Okay, so India has the good relations with US, Russia, and in West Asia with Israel, Iran, GCs. That is India's strategic balancing. Yes, issue-based partnerships based upon enlightened self-interest, that will also come. यहाँ पे आएगा वो इसके elaboration में, ठीक है। Next, geoeconomics. Due to economic reforms of 1991, so India shifted from socialist to global integration. क्या इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? Yes, recently अभी, I think in last month या last to last month, India signed UK FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया, right? Next, in terms of geoeconomics, what else? So, Right? there has been rising tendency of the Western countries moving towards Indian markets, like China plus one policy. So India is emerging as the producing country. I mean, the like iPhone production in India. So ठीक है। तो see, geoeconomic में again हमने जो एनर्जी सिक्योरिटी का पॉइंट लिखा, राइट? सो एनर्जी security by strengthening the relationships with this West Asia through I2U2 and Indo-Pacific strategies. This reflects the shift from idealism
to realism. Okay. India is buying from the countries where the sanctions are there, even the countries involved in the war. Okay. Then, with respect to the defense and security, yes, what can be the point? Hmm. Not diversification. What is the biggest shift in India's defense and security diplomacy? What is the biggest shift? Sir, again, it is strategic balancing because एक पॉइंट हमने क्या लिखा है? indigenization, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते थे और 1998 में हमने खुद ने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर लिया एंड वी बिकम न्यूक्लियर नेशन, राइट? सो इंडिया बिकमिंग न्यूक्लियर पावर. as well as it is indigenization, it's warfare. वो मतलब ट्रेडिशनल रोल से कैसे ये करोगे? ट्रेडिशनल इमेज एज द लीडर, but earlier it was the advocate of disarmament, but now we have become the nuclear power. Okay, again UN peacekeeping will also won't come because it is again India's earlier role. UN peacekeeping तो हम पहले से ही करते थे ना, ठीक है, नया नहीं है, तो that also won't come. ठीक है. Then with respect to the multilateralism, so multilateralism में यहाँ पे you write that for great power ambition reflected in actist policy and Indo-Pacific policy or Indo-Pacific strategy. The voice of global south will come as the counter argument. हमें बताना क्या है कि इंडिया का ट्रेडिशनल इमेज डिमिनिश कैसे हुआ है? ट्रेडिशनल इमेज एज द लीडर ऑफ अप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड. So voice of global south will come into the counter argument. ठीक है, we have to write the points where India is not the voice of global south. ठीक है. Then what else? With respect to the multilateralism, reduced involvement in norm. ठीक है. You won't believe this, but Modi ji hasn't attended the NAM summit. ठीक है. There was a scope to give the speech also, but still he hasn't attended the NAM summit. एक नाम समिट उन्होंने अटेंड की थी वर्चुअली ड्यूरिंग कोविड, या अदरवाइज ही हैजंट अटेंडेड द नाम समिट. उसका एग्जांपल भी वही आएगा, वेयर पीएम हैज स्किप्ड द नाम समिट. सो दीज पॉइंट्स हाईलाइट कि हाउ इंडियाज रोल एज द लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड हैज डिमिनिश्ड. Then you've come to the counter argument. However, India continue to be the voice of global south. ठीक है. तो इसका सबसे पहले तो अब साउथ साउथ कोऑपरेशन मॉडल एग्जाम्पल इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप. ठीक है, ब्रैकेट में चाहिए तो पैन अफ्रीका ही नेटवर्क लिख दो. ठीक है, दैट. सेकंड,
with respect to the climate justice, India's advocacy of CBDR principle, common but differentiated responsibilities. Third, in और इसी में आपका सेकंड this through international solar alliance, ठीक है, that then पंचशील प्रिंसिपल स्टिल गाइड बायलैटरल रिलेशन, किसके साथ करते हैं, ठीक है. देन WTO, इंडियाज एडवोकेसी फॉर दोहा डेवलपमेंट agenda and opposition to new issues. New issues as in the Western countries wants to sideline Doha development agenda in WTO and they want to introduce new issues जैसे data governance, AI ethics या फिर environmental standards or labor laws etc. So they want to introduce these new issues under WTO and those new issues are not in the interest of global south. The Doha development agenda is in the interest of global south. So India still advocates on Doha development agenda. This is one of the primary reasons behind dysfunctional WTO. Okay. Then you can also write with respect to the this UN reforms. India calling for UNSC reforms. Example, PM's call for reformed multilateralism. ठीक है, मोदी जी का quote है, when we will do the UN का question, there we will have that quote. Reformed multilateralism with reformed UN at its center can solve the problems of humanity. ठीक है, so reformed multilateralism. बाकी आपको अगर देने हैं तो sustainable infrastructure, ठीक है, through Asia Africa growth corridor. One more key, this pragmatic, this is also the term, idealism in West Asia. Example, India's support for two nation theory. Not two nation theory, sorry. कोई तो बोलो, two state solution. Israel Palestine conflict. Okay, so India continue to take the principled stance. ठीक है, ये समझ आया? Now let's see the keywords. यहाँ पे अगर देखोगे तो on first of all on any question related to the emerging world order या फिर global order या फिर world order हो तो उसके लिए you can use start with this जो अब मैं कोड दे रहा हूँ. ठीक है, this shift, the international system is shifting from unipolar and western led liberal order to more hybrid, decentralized and polycentric system. मल्टीपोलर वर्ड कुछ नहीं है इसमें, मतलब यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो रहा है, बट वो वर्ड्स आपको लाने हैं, हाइब्रिड, डिसेंट्रलाइज्ड, पॉलीसेंट्रिक. ठीक है, पॉलीसेंट्रिक मतलब मल्टीपल सेंटर्स,
In this context, India's role has also transformed as emerging global power. ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे तो दिस आई हैव टेकन दिस फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, इस वाले आर्टिकल से लिया है मैंने। क्या वैसे ही कहीं से नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की शिफ्टिंग फ्रॉम यूनिपोलर वेस्टर्न लेड ऑर्डर टू मोर हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज्ड पॉलीसेंट्रिक सिस्टम बीइंग रेफर्ड टू एज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ग्लोबल ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन का आपका ये यही रहेगा इंट्रोडक्शन, या फिर देर आर फ्यू स्कॉलर्स ऑल्सो। ठीक है, तो जैसे जोसेफ नाय करके एक स्कॉलर है, अकॉर्डिंग टू हिम द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर इज लाइक अ 3D चेसबोर्ड मॉडल, where in terms of military world is unipolar, where there is a dominance of US. In terms of economy, world is bipolar. Okay, that is between China and US. And in terms of the society or culture, world is multipolar. ठीक है, यहाँ चाइनीज, द इंडियन सॉफ्ट पावर, द यूएस का हॉलीवुड, ऑल आर देयर। वो 3D चेस बोर्ड मॉडल उसको वो कहता है। ठीक है, दैट बट अगेन याद रखो, अगर वो भी यूज आप कर सकते हो, या फिर ये देन इंडियाज अर्लियर रोल इन नॉन अलाइन मूवमेंट promoted strategic autonomy and South-South solidarity against superpower blocks, या फिर नॉन अलाइनमेंट एज दी, जिसको पीएम मोदी ने कहा था, मॉरल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, सेकंड, इकोनॉमिक एडवोकेसी पुश्ड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर टू रिफॉर्म ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस। Third, decolonization, opposition to apartheid in South Africa. Fourth, from the defense and security perspective, global nuclear disarmament and WTO advocacy for Doha agenda. But shift in India's global posture, rise in geopolitics and diminishing traditional role. Economic liberalization, shift from third world solidarity to global integration. उसका example, the recent FTA with UK. Second, shift from non-alignment to multi-alignment. Strategic partnerships with US, Japan, France, Israel, based upon enlightened self-interest. If you want bracket में, you can give the S. Jaishankar. It was given in this editorial. This was Narendra Modi skips Nam Summit again. India will never be a part of alliance system. तो इसमें उसने कोड दिया था, age of alliance is over and India will go for issue based partnerships based upon enlightened self interest. तो ये आपका कीवर्ड आप याद रखो। Then membership of Quad, SCO, BRICS signal pragmatic engagement rather than ideological blocks. ठीक है, अगर आप देखोगे तो Quad has the complete different agenda than SCO and BRICS. ठीक है, but India is still the member of both. ठीक है, तो India is always in all the groups. Quad का भी है and SCO का भी है and BRICS का भी है, though the agenda of both are completely different. Okay, so there can be only two reasons for it. Either we are very good at diplomacy, या फिर nobody takes us seriously. ले लो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला। So, दो ही reasons हो सकते हैं इसमें, either we are very good at diplomacy or the second one. Okay. Next, nuclear tests, assertion of national power replaced earlier moral
idealism. Next, he reduced role in NAM, PM Modi skipping NAM summit. Okay. Energy diplomacy, partnerships with Saudi Arabia, UAE, Israel, Iran reflect interest-based balancing over ideological affinity. ये कीवर्ड आपको रट्टा लगानी है, इसके बेसिस पे चारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. देन ग्रेट पावर एम्बिशन, reflected in active policy Indo-Pacific strategy. Okay. Then strategic balancing, maintaining relations with US through Quad, Russia through defense, and China through BRICS, reflects multi-vector diplomacy. ये तो हमने कल भी यूज किया था. However, India still asserts its ethical stance and voice of global South. South-South cooperation, lines of credit, ITEC training, humanitarian aid. ठीक है. टू ओवर 100 नेशंस लिख दो, 150 प्लस नेशंस लिख दो, 160 प्लस नेशंस लिख दो. ठीक है. सभी जगह पे जाके आई ही है, तो सभी जगह देके आई ही है. ठीक है. नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री, vaccines to 90 countries, voice of global south summit 2023. ठीक है. Then climate change advocacy, India stand for CBDR principle, digital public goods diplomacy, example UPI models in Africa. ठीक है. Then ये एक important keyword है, ethical multilateralism, call for UNSC reforms, rule-based order rooted in ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, and one earth, one family, one future. Yeah, this is again from the quote of PM Modi. Okay. Next, world order today is in flux. This is from the editorial of M.K. Narayanan, who was National Security Advisor, and issue-based partnerships rather than alliance is the order of the day. Yes, Jaishankar. ठीक है. अब ये वाला आंसर आपको आपके दिमाग में एकदम फिट रहना चाहिए. यही कीवर्ड्स हमें आगे भी यूज करने, इसके बियॉन्ड कीवर्ड्स है ही नहीं. ठीक है. इफ यू सी, ऑल दीज आर फ्रॉम द एडिटोरियल. जैसे वर्ल्ड ऑर्डर इज इन फ्लक्स, इतना ही. इसके बियॉन्ड आपको अब कुछ एडिटोरियल पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है. दीज कीवर्ड्स ओनली यू हैव टू यूज. अगर आप देखोगे नेक्स्ट आंसर भी, ठीक है, दैट इंडिया एज द अल्टरनेटिव, कोल्ड वॉर, वो post cold world order is becoming site of sovereign nationalism. Diaspora. When we will do the next answer, you will see. Okay. So you write this answer. इसके try to ensure that इसमें out of 5 you write 4 points. वो भी briefly, जैसे economic advocacy under for or advocacy for new international economic order in global trade and finance. ऐसे पॉइंट को रिफ्रेश करके आप शॉर्ट ले. ठीक है. यहाँ पे 4, यहाँ पे आउट ऑफ 9 यू राइट 7 पॉइंट्स. सो ये एनर्जी डिप्लोमेसी का दिस पॉइंट यू कैन स्किप. बाकी सारे आएंगे ही. ठीक है. सो यू राइट 8 पॉइंट्स हियर, एंड हियर यू राइट यूजिंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ आपका ऐसे आएगा कि however India still asserts its ethical stance and voice of global, और ethical stance ही लिखो. इसमें इंडिया has
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, या फिर सिंपली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ करो। साउथ साउथ कोऑपरेशन एग्जाम्पल, line of credit to Africa. Second, HADR example, vaccine making. Voice of Global South Summit. Ethical multilateralism. Climate justice. CBDR. यहाँ पे डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी. One is example, Pan Africa e-network, या फिर in Afghanistan, where India has around $3 billion of the investment. तो ये डायग्राम करके लिखो, then you conclude. ठीक है, ये क्लियर है? ऐसे तो इसमें भी 6 आपके हो जाएंगे. ओके, so you write this complete answer. It's 7:36, you have till 7:48. थ्री chessboard model is Joseph Nye. He has also given the concept of complex interdependence. He is called as the liberal realist. अब इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है थोड़ा सा यार में कि नहीं? अभी भी हो रहा है ना? गुड. तो एडिटोरियल अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से आएगा. Okay, write this. Then we'll do 2 more answers. Those are also interesting. हो गया सभी का? 3 पेज भर गए ना? 3 पेज भर गए ना? Okay, good. So the next question. Perfect. अब बस कि USA is facing existential threat in the form of China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. Explain this. Again, who wants to give me the structure? I just need the heading. Yes, Tanmay. Yes, sir. So I think introduction, we can either go for paraphrasing or we can use the same introduction that we used for the global powers.
in the last one from Western led to multipolar. ठीक है. Then the first heading can be challenges of the erstwhile Soviet Union. Then the next one can be existential threat of China. Yes. We can subdivide this in the headings that we usually use, like geoeconomic, geopolitical. Yes. Next. We can give a way forward. Not way forward. ठीक है. अब यहाँ पे there are two structures. ठीक है. The one, if you recall, the first answer that we wrote or that we discussed today, जिसमें ये वाला, ठीक है. The first answer, this one. यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी they ask the question in comparative terms कि the significance of Indo-US defense deal over Indo-Russian defense deals. यहाँ पे if you see, तो हमने we made a single heading where we added 2 points on the significance of the US and 1 on the limitation of the Indo-Russia. या फिर we prepared a point ki where we are providing the comparative statement. Right? So one approach is that where you will be also giving the single heading key threat of China bigger than that of Israel, USSR. ठीक है. एक ही इसमें आप comparative terms में you can write these statements. ठीक है. That is the one approach where while China is the comprehensive national power. ठीक है. Comprehensive national power means it has the power in all the 3 domains of the power. That is, it has hard power in terms of the military. It is challenging USA in Indo-Pacific. In terms of the economy, it has surpassed USA in terms of PPP terms and in terms of the soft power also. Okay. So it is a comprehensive national power, whereas USSR was majorly a military and ideological power. They had the ideology of communism and they had the military might. Uske beyond, they were not economic power. ठीक है. पैसे नहीं थे उनके पास. तो ऐसे कंपैरेटिव टर्म्स में यू कैन प्रिपेयर दी सिंगल हेडिंग्स, या फिर जैसे अभी तन्मय ने कहा, यू कैन मेक द 2 हेडिंग्स की challenges of USSR and the limitations of it. So while writing the points, you will articulate in that way. It was majorly limited majorly military and ideological power. For example, USSR and nuclear deterrence. ऐसे. And then you can go for how China is bigger threat. ठीक है. So in terms of इसमें again
in terms of the geopolitics ये था. Second, in terms of the geopolitics, it was majorly a continental power. ठीक है, यूएसएसआर मतलब क्या, रशिया ही था. रशिया के हमने जो लिमिटेशंस लिखे थे, इट इज मेजरली अ कॉन्टिनेंटल पावर with limited maritime capacity. ठीक है. So, Then, but then Cuban Missile Crisis, sorry, Cuban Missile Crisis invalidates this point. Cuban Missile Like Crisis. Russia had influence in South America as well. पर वो तो एज ए एक्सेप्शन हो गया ना. अदरवाइज अगर ग्लोबल इसमें देखोगे तो इन अफ्रीका दे हैड लिमिटेड. ठीक है, इवन इन एशिया ऑल्सो. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ इंडिया, बाकी जगह कहीं सस्टेन नहीं कर पाए. इवन दे लॉस्ट द अफगान वॉर ऑफ 1978. ठीक है, बट वियतनाम में जीत गए थे ना. वियतनाम में भी अगेन वो तो इनिशियल फेज में था ना. वियतनाम वॉर हुआ कब था, 1960s में. ठीक है, इवन 60s में. एंड अगेन Right. the role of USSR was very limited. It was majorly because of the leadership of Ho Chi Minh in Vietnam and Fidel Castro in Cuba. ठीक है, Right. वैसे ना. इवन अगर नॉर्थ कोरिया देखोगे तो So, नॉर्थ कोरिया में भी दे वो हैड प्रॉक्सी वॉर ही था जैसे यस, आज के हो रहे हैं, तो प्रॉक्सी प्रॉक्सी वॉर वॉर ही थी. था. उसमें नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर बैक कर रहा है, साउथ को साउथ, यूएसए, बट बट नॉर्थ जीत जितना गया. इन्फ्लुएंस यूएस का साउथ कोरिया में है, ठीक है, या फिर उस टाइम पे जो आधे वियतनाम में था, ये उतना इन्फ्लुएंस यूएसएसआर का कभी नहीं था. नॉर्थ कोरिया में क्या इन्फ्लुएंस है यूएसएसआर का, या क्या इन्फ्लुएंस था यूएसएसआर का. ठीक है, Yeah, साउथ right. कोरिया का एंटायर इकोनॉमी और या फिर एंटायर डिफेंस वाज कंट्रोल्ड बाय यूएसए. तो आइडियोलॉजिकल पावर तो था. ठीक है, मिलिट्री पावर भी था, बट मेजरली इट वाज लिमिटेड टू द कॉन्टिनेंट ओनली. लिमिटेड मैरीटाइम कैपेसिटी इन इंडो पैसिफिक. मैरीटाइम कैपेसिटी, नेवल कैपेसिटी उनका हमेशा से कम था, बिकॉज उनको जरूरत ही नहीं थी. दे डोंट हैव एक्सेस टू दी सीज. ठीक है, एक ही एक्सेस है उनको ब्लैक सी से, अदरवाइज उनको एक्सेस ही नहीं. ठीक है, देन इकोनॉमिक शेयर हाँ. was less than 10% of global economy. ठीक है, इतने 3 से 4 पॉइंट आपके सफिशिएंट. बट चाइना, अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, it is talking about, there is a term given by the Xi Jinping in 2018 where he talked about the new model of great power relationships. Okay. So they talked about, very clearly highlighted that world is no more unipolar, and we have to develop the new model of great power relationship where US will treat China as equal. And in that same conference, we also held that China is ready to lead the globalization. Okay. Second, in terms of geopolitics itself, okay, China has the comprehensive national power. Okay, in terms of military, economy, technology,
and soft power. ठीक है. Third, Indo-Pacific expansion. कि जैसे मैंने कहा कि इन यूएस दे हैड द मुनरो डॉक्ट्रिन कि वेयर they didn't tolerate any foreign influence in their neighborhood. ठीक है, इसीलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इतना बड़ा हुआ था बिकॉज यूएसएसआर केम इन द बैकयार्ड ऑफ द यूएस. तो मुनरो डॉक्ट्रिन में क्या कहा गया था कि यू डोंट कम इन आवर नेबरहुड. यूएसए के नेबरहुड में जनरली कोई कंट्री इंटरफेयर नहीं करती, इसीलिए तो साउथ अमेरिका में यूएसएसआर, ईयू या फिर यूरोपियन कंट्री, इवन चाइना का भी प्रेजेंस बहुत लिमिटेड है. यूएसए इज वेरी केयरफुल अबाउट दैट. उनका मुनरो डॉक्ट्रिन वो कहता है. ठीक है, बट अब यूएसएसआर इज ऑल्सो द रेसिडेंट पावर इन इंडो पैसिफिक. ठीक है, या फिर पैसिफिक ओशन, एंड चाइना इज एक्सपांडिंग इन इंडो पैसिफिक वेयर इट हैज डायरेक्टली challenged the US assertion in South China Sea, Taiwan Strait, and Indian Ocean. Example, what is the strategy that they have used? Boiling frog strategy. Boiling frog strategy. ठीक है. Next, in terms of the geoeconomics. So first of all, it has surpassed US in PPP terms. ठीक है. Second, it is establishing the parallel institutions Checkbook diplomacy. to Bretton Woods. इसका एग्जाम्पल क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. ठीक है, दैट. सेकंड, थर्ड, अनलाइक the USSR, it is integrated in global economy. ठीक है, which creates complex interdependence. ठीक है, complex interdependence is basically कि you have the so complex interdependence in simpler terms is you have to work with someone whom you hate. Okay, or you have to work with someone whom you prefer to hate. ठीक है, so that is the complex interdependence कि दो both countries hate each other or consider each other as the competitor, but still USA, जैसे यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ लगाए, ईयू पे टैरिफ लगाए, वैसे वो चाइना पे लगा ही नहीं सकता बिकॉज इट विल क्रिपल द यूएस इकोनॉमी ओनली. राइट, बिकॉज चाइना कंट्रोल्स 70% of global supply chains. ठीक है, so it is 18% of global GDP and 70% of supply chains. ठीक है, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, और आपने पढ़ा भी नहीं होगा, इट वाज इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ आई थिंक 2018. ठीक है, द लेवल ऑफ द सोफिस्टिकेशन दैट चाइना हैव ब्रॉट. सो दी आपके शर्ट के या फिर टॉप के जो बटन्स होते हैं, ठीक है, सो द 90% ऑफ दोज बटन्स कम्स फ्रॉम वन चाइनीज सिटी.
90% of the global buttons they come from just one Chinese city. वो पूरे सिटी में लोगों का काम ही यही है कि वो बटन्स बनाते हैं. ठीक है, तो दैट इज द लेवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल दैट दे हैव अचीव्ड. ठीक है, इसीलिए they have the control of 70% of global supply chains. Okay, just imagine it's a simple thing, but the economy of entire one Chinese city is dependent upon that. That case study was there into the economic survey of ours. ठीक है, the button city of China. अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना उसके बारे में. ठीक है, next. So this can be also our next point, like they have trade surplus with more than 100 nations. That can also write this. So you can write that trap diplomacy. ठीक है, थ्रू BRI and surplus deficit strategy. ठीक है, then unlike the USSR, China also has this key technology advantage in areas like AI, 5G, and semiconductors. ठीक है, if you want, you can also write weaponization of supply chains. Okay. So it controls, या फिर recently they banned on the export of critical minerals. Okay. या फिर they control 90% of critical mineral supply chain. ठीक है, that. Or if you want their attempt to internationalize. Yuan. Yes. Yuan. ठीक है. So can you help me understand one concept? I have a little doubt regarding one of the point. The first point that we wrote in geoeconomics, it has surpassed US in PPP terms. ये PPP terms की कोई वैल्यू होती, शायद इंडिया का भी US से ऊपर है, इंडिया सेकंड है, मेनली नॉमिनल रहता है, इसका फायदा होता क्या है? Nominal it basically highlights the level of inflation in the economy. ठीक है, तो PPP terms is actually the you can say real economic growth या फिर the real GDP of the country. ठीक है, नॉमिनल के टर्म्स में कितना भी हो क्या फायदा है. ठीक है, if your income is 10 rupees and if you are able to survive on 5 rupees in a month, ठीक है, then you have the saving of 5, but your income is 20 rupees, but आपको लगता ही 25 rupees है for survival, then in that case you can't say कि you are richer than the person earning 10 rupees. ठीक है, so that's the in terms of the purchasing power parity. The level of the inflation that US has. ये यूएस में ऐसा आपको घर, you won't find a house without an EMI या फिर credit culture, and that is why US has around 27 या फिर I think 20 trillion of the debt. Okay, US is completely consumption based economy, so ultimately it has to bust. They have a lot of debt, whereas China is the export led economy, so they always have the surplus, because so their inflation will always be controlled. Got it. Yeah, yes. Then defense and security. So इसमें again PLA modernization
and attempt of blue water economy, not economy, blue water navy. ठीक है, that next with respect to the dual use infrastructure under BRI. Example, you have Djibouti, they have their base there. Second, Gwadar port. Right. Then multilateralism. Within multilateralism, again, it is the global south outreach through expansion of अभी ब्रिक्स. सेकेंड, उन्होंने SCO का भी एक्सपांशन किया है. ठीक है. देन ठीक है, इतना सफिशियंट है. देन कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से BRI. यस, तो न्यो कॉलोनियलिज्म थ्रू BRI. Okay. And second is the digital silk road, under which they are controlling the entire digital economy of the countries. तो इतने आपके पॉइंट्स बनेंगे इसमें. इसमें से आपको जितने भी याद है आप उतने लिख सकते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट, ब्रीफली you can highlight steps taken by US. ठीक है. So steps taken, उसने फर्स्ट की इंडो पैसिफिक पिवोट स्ट्रेटजी. अगर आपको स्पेसिफिक एग्जांपल लिखना है तो दे रीनेम्ड देयर पैसिफिक फ्लीट टू इंडो पैसिफिक फ्लीट. ठीक है. नेवल उनका जो कमांड है उसका रीनेम कर दिया. सेकंड, रिवाइटलाइजिंग कॉड. थर्ड, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव. ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखो, नेक्स्ट ईयर भी इसी पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है. ग्लोबल ऑर्डर पे क्वेश्चन आना ही है. ठीक है. सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव फॉर की वन, जो मैंने टर्म कही थी, फ्रेंड शोरिंग China+1. और डीकपलिंग अंडर China+1. डीकपलिंग मीन्स कि अभी उनका जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है कि वेयर they are integrated, so they want to decouple from the, so basically it is reducing the dependence on China. Okay, so decoupling strategy is followed by all the major economies including US, EU, all the European countries. ठीक है. इसीलिए इंडिया को थोड़ा बहुत वैल्यू मिलता है. ठीक है. अदरवाइज कोई हक नहीं करता है. So because of the decoupling strategy, they are considering India as the balancer to China. Okay. Then to counter the connectivity project of China, that is BRI, they have launched Blue Dot Network with Australia and Japan. Okay, And so this bring is, back better world as well. yes, that also.
This is for transparent or transparency in infra projects. Okay. Then in geoeconomics, they have also launched Indo-Pacific Economic Forum. Okay. बाकी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड टैरिफ वाला भी आप पॉइंट लिख सकते हैं. इतने. And then conclusion, again similar conclusion कि world order today is in flux. India specific दे दो, India should follow the issue based partnership in turbulent world. ठीक है. या फिर there are two quotes specifically with respect to the China. ठीक है. नेक्स्ट ईयर अगर इंडिया चाइना भी रिलेशन आ गया तो भी आपको वो यूज करना है कि वन वॉज गिवन बाय द अलेक्जेंडर द ग्रेट. व्हेन चाइना विल वेक अप फ्रॉम द स्लंबर, चाइना अभी सो रहा है, व्हेन द ड्रैगन विल वेक अप इट विल एस्टोनिश द वर्ल्ड. ये कोट चाइना के कंटेक्स्ट में याद रखो. एंड द सेकंड कोट इज ऑफ द हेनरी किसिंजर कि USSR was the military threat. China is the civilizational threat. Okay, because USSR was basically a Catholic country. अगर वैसे देखे तो secondly it was also the industrialized country. ठीक है. Only difference was who will control the industries. But China has altogether different model. In politics, they have authoritarian capitalism. In economics, they have mixed economy. In technology, they have greater state control or the restrictions. In society, they follow the communism कि there is no state religion. ठीक है. वहां पे आपको रास्तों पे मंदिर दिखेंगे ही नहीं in China. ठीक है. So in society, they go for the uniformity. So in terms of that, China is the civilizational threat. तो यूएस का जो लिबरल ऑर्डर है, चाइना हैज द कंप्लीट अल्टरनेटिव टू दैट, अनलाइक यूएस. Sir, whose quote was this? Civilizational threat. हेनरी किसिंजर. And sir, can we use some Samuel Huntington's book as well if we want to mention in IR questions? Clash of Civilization. क्लैश ऑफ, बट नहीं, वो स्पेसिफिकली चाइना के रिलेटेड नहीं है. एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग कि कोल्ड वॉर was basically ideological war. It was between capitalism and communism. So it was the bipolar war. But after the Cold War, there is no framework for the fault lines. So after Cold War, the war will shift to the identity basis. So war will be fought based upon the religion, race, etc. So what he has said, with Cold War we have killed the python. यहाँ पे एक सिंगल कम्युनिज्म का थ्रेट था, बट वी हैव गिवन राइज टू दी मल्टीपल स्नेक्स. सो आपका थ्रेट जो है वो मल्टीप्लाई हो गया. You have the threat from terrorism, you have the threat from this rising nationalism and racialism, you have the threat from the deglobalization, you have the threat from the China. Okay, so globalization or end of Cold War has ended the python. We have killed the python but given rise to multiple snakes. तो ये आप टेररिज्म रिलेटेड क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. ठीक है. या डिग्लोबलाइजेशन वाले में, बट चाइना वाले में नहीं. ठीक है. ये क्लियर. ये भी याद रखो, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन. अब इसका अगर मॉडल आंसर आप देखोगे, अगेन द कोट
In words of Henry Kissinger, Soviet Union was the military threat, China is civilizational threat. Okay. Next, limitations of challenges from Israel Soviet Union, primarily military and ideological. Example, communism and Cuban Missile Crisis. Okay. Then limited economic challenges, less than 10% of global GDP. Then USSR lagged behind in high-tech industries, focusing mainly on defense and space. ठीक है उसके उनकी इकोनॉमी वीक थी बेसिक वाज इकोनॉमी यूएसए ने बेसिकली क्या किया दे फर्स्ट ऑफ ऑल proxy war in Afghanistan, so that costed their economy. Secondly, the Ronald Reagan in 1987 launched the Star Wars. ठीक है स्टार वॉर्स मतलब यूएसए ने अननेसेसरीली मतलब एज अ स्ट्रेटजी दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इन नासा एंड द स्पेस वॉर्स तो वो अपोलो मिशन वगैरह तो वो सारे या फिर स्पेस में दे ऐसे ही सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे उसको यूएसएसआर के ऊपर रख देंगे यूएसएसआर विल फील थ्रेटन वो खुद का लॉन्च करेगा तो उसमें खर्चा होगा तो ऐसे दे वीकन देयर इकोनॉमी थ्रू स्टार वॉर्स एंड थर्ड उनका खुद का रीजन था द चेर्नोबिल crisis which costed around 60 billion of that times ठीक है because of that it collapsed because it had or it always lacked in high tech industries. Next, a limited soft power compared to USA, example Hollywood ठीक है and that is why अगर आप देखोगे तो it was a very interesting observation made by the Cold War strategist की the fall of Berlin Wall marked the end of Cold War. Right? World history में आपने पढ़ा होगा. Cold War ended with fall of Berlin Wall. है ना? Yes, no तो बताओ. Right? But that Berlin Wall was not demolished by the tanks or by the military. Berlin Wall was demolished by the people only. है ना? From the Eastern Germany. They broke that Berlin Wall. So ultimately, because of the USA's soft power, the attraction of capitalism and the USA and their consumerist culture was such that people themselves broke that Berlin Wall. Because of soft power was also the important determinant in Cold War. Okay, next, the Soviet threat was largely European and nuclear, with limited maritime reach in Indo-Pacific. With respect to the China projects alternative governance and development model of authoritarian capitalism. Second, Indo-Pacific expansion in South China Sea, Taiwan Strait through boiling frog strategy. Geoeconomic parallel institutional ecosystem through AIIB, NDB, BRI, undermining Bretton Woods institutions. Then integrated global economy leading to complex interdependence. 18% world GDP, supplier of 70% global supply chains. Then debt trap diplomacy through BRI loans and surplus deficit strategies. Technological rivalry in AI, 5G, EV, green manufacturing. या फिर the weaponization of supply chains. Example, ban on critical mineral exports. Okay. And then trade imbalance around 350 billion with the US, yuan internationalization. Defense, PLA modernization, Blue Water Navy. Okay. Then dual use infrastructure, BRI ports and bases, Djibouti and Gwadar. Global South outreach through BRICS, SCO, G77, eroding US soft power.
issue based. Unlike USSR's bloc politics, China uses flexible interest based partnerships. जैसे USSR had no relations with EU, it didn't had any relation with any of the capitalist country, whereas China has the interest based partnerships with EU on climate, Russia on energy, unlike USSR. And then connectivity, BRI Digital Silk Road from leading to neo-colonialism. Then steps taken by US, these. Then conclusion, as said by Alexander, China will astonish the world when it rises out of slumber. Okay? And sustained strategic competition without conflict is essential to ensure peace. ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हो. अब इसमें I have given all the entire content. इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट क्लासीफाई. इसमें हर किसी के जियोपॉलिटिकल के 2, जियो इकोनॉमिक के 3, सिक्योरिटी का 1, मल्टीलैटरलिज्म का 1, कनेक्टिविटी का 1 पॉइंट. ठीक है. सो इसमें से 2, इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1, 5, and you pick 4 points from here. So that will be total 9 points. इसको you have to use a flow chart. ठीक है. And steps taken also through flow chart. If you bring these many keywords into the answer and these many dimensions with 2 quotes, you get 10 में से at least you will get 6.5 to 7. ठीक है. ये clear है? Yes. Any doubts? No, I don't think I missed any point also. Okay. So you write this answer, we'll stop here. Next question is also similar. West is fostering India as the alternative to reduce dependence on China. Explain with examples. Again, same framework, so we will write the answer tomorrow. But now you write this answer. Okay, and then we'll end our session. You have 7 minutes. अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है आईआर में. ठीक है. आईआर बोरिंग नहीं है. And you can maximize your scoring in GS4 with IR only. Why would UPSC ask question without Indian context? अब यूपीएससी को ही पता है. जैसे emerging world order is also the theme or the topic in this IR. Yes, Uday. Yes, Pratik. So here we have countered the main argument by saying that US is also making a comeback. How about we rather give the other argument that the world is no more just unipolar and moving towards multipolarism, rather even minilateralism. नहीं, बट वर्ल्ड ऑर्डर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही नहीं है ना. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है यूएसए फेसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना बिगर देन दी सोवियत यूनियन. वर्ल्ड ऑर्डर का पूछा ही नहीं है. Right, यूएस right. के और चाइना के कंटेक्स्ट में ही पूछा है ना. Right. Yes, steps taken will make more बाय sense. यूएस वही आएगा इसमें. Understood, sir. Thank you. यस उदय. Sir, I understood what is a boiling frog, but how is China using it? Can you give example of?
तो यूएस यूजिंग इट, चाइना इज टारगेटिंग द स्मॉलर कंट्रीज जैसे फिलीपींस went to the that UNCLOS, United Nation Convention on Law of Sea. It used that and went to the, I think, ICJ, where ICJ gave the verdict in favor of Philippines. ठीक है, but China didn't adhere to that judgment. उन्होंने माना ही नहीं है. So they are targeting the smaller countries who coercion. So artificial island create कर रहे हैं. Then अभी रिसेंटली न्यूज आया था कि आई थिंक फिलीपींस का ही था या मलेशिया का था. सो दे वेर पेट्रोलिंग इन द ओशन. चाइनीज ये आ गए वहां पे, नेवल शिप्स आ गए. दे इंटिमिडेटेड देम. ऐसे करके वो कैप्चर करता है. सो चाइनाज स्ट्रेटेजी इज बेस्ड अपॉन सुनजूज आइडिया ऑफ सबड्यूइंग द एनिमी विदाउट वॉर. तो वो बस इंटिमिडेट करके जीतते हैं. Yes, salami slicing also is similar to boiling frog strategy. ठीक है, so that is the strategy of intimidating. डायरेक्टली यूएस को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, बट छोटे छोटे कंट्रीज को करेंगे. छोटे छोटे कंट्रीज को करके उनका जब प्रेजेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, देन दे विल डायरेक्टली टारगेट द यूएस. Dual use of infrastructure means infrastructure for the connectivity and infrastructure for the military use, where they establish their military or the naval bases. जैसे गदार पोर्ट में है या फिर जिबूटी में है. yes. Even the Hambantota port in Sri Lanka. Okay, give me the confirmation when it's done. ठीक है, हो गया सभी का. ओके, ये तो आसान है, 2 पेज आराम से भर गए होंगे. राइट. ओके, we are still left with 3 questions for today. We'll start with these 3 tomorrow. ठीक है. अभी any doubts? Those who want to write SM test, take a 10-minute break and then you can attempt the tests. बाकी अभी any doubts? Yes. Yes. मोनालिसा. अब आया, ठीक लग रहा है, अब इजी हो रहा है थोड़ा सा कल से. ठीक है. Yes. कल अगेन, कल का एक लेक्चर एंड आपकी वो वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी. ठीक है. यस. यस मोनालिसा. Sir, I wanted to ask that, like, I'm not able to complete paper on time, and like, I can't figure out like, why is that happening? तो इतना जल्दी होगा भी नहीं आपका पेपर कंप्लीट. ठीक है, किसी का नहीं होता है. ठीक है. पेपर कंप्लीशन, यू don't even focus upon the paper completion till. So paper completion means not in the full length test. I'm talking about the answers which we are writing in class. I'm talking about that. तो उसमें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेके लिखो. ठीक है. अब जैसे नॉर्मली आई गिव 12 minutes एंड 7 to 8 minutes. तो उसमें अगर 1 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो लेके लिखो. ये पेपर कंप्लीशन का ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है. इट्स ओनली. And plus, sir, I have noticed that if I'm making any flow chart or diagram, then for sure I'm not able to complete. Like if I don't make them, then still there's a chance. But like diagrams and all, it's creating problem. Diagrams are creating the problems. Yes, sir. So, sir, is it possible that instead of diagram, we can add 1 or 2 extra points for analysis to compensate for a diagram? Diagram मतलब which diagram you are talking about? So, like in governance also, we have done some like diagrams, and in IR also, you were talking about some diagram for connectivity. So those part. No, that is not the diagram. It is map. Yes, sir, map. But again, किसी the purpose of the diagrams is again to improve the presentation. और ऐसे मैंने I don't think I have given many complicated diagrams. ठीक है. Second thing, कि जितने भी diagrams we have practiced, वो आपको याद रखने, कोई आपको नया डायग्राम ऐसा नहीं निकालना. इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोडक्शन 10 सेकेंड में आपका वो डायग्राम हो जाना चाहिए. जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो या फिर एनजीओ वाला हो, इनपुट आउटपुट डायग्राम विच वी प्रैक्टिस. तो दैट शुड बी कंप्लीटेड इन मैक्सिमम 10 seconds, क्योंकि वो यू हैव द रेडीमेड डायग्राम्स. ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने
क्वेश्चन देख के डायग्राम्स बनाए हैं। आई हैव गिवन यू द रेडीमेड डायग्राम्स और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम ही मैं आपको बताता हूँ, या फिर आई हैव एडेड दोज इन एक्स फैक्टर आल्सो। Yes, sir, but they're not getting completed in 10 seconds. Like it's taking a bit time. So that is why I was saying that if we write an extra point instead of a diagram or something, will that work? इट कैन, अगेन ऐसा नहीं है कि हर कोई निकालता ही है, इट कैन। यस, बहुत सारे अगर आदित्य श्रीवास्तव के या फिर अनिमेश के आप देखोगे तो मेजोरिटी में आपके उनके डायग्राम्स है ही नहीं। दे हैव डन इट विथ द कंटेंट ओनली, यू कैन राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। And sir, I also wanted to say that, sir, the classes are happening, and especially when there's consecutive class, and I have my optional class and answer writing of that also working. So, sir, what is happening is that Consecutive classes will happen for the next 2 days only. no, sir, even when there is an alternate class for that also, I'm saying like what's happening is that neither this is getting completed nor anything of the optional is getting completed, and everything is remained pending 50-50%. So, sir, like that is also creating a problem. For that, there is, see, first of all, again, I am saying कि wherever possible, I am asking you to skip the X factor notes, right? Secondly, you prioritize the content. So, from the topics where maximum questions have been asked, you cover those. See, even if you finish the 70% of the syllabus by the time of mid-January or last week of the January, okay, then also it's fine. 30% you can easily complete after the prelims. So like for IR, I had taken foundation course, so I have notes of that also, like for IR governance, society, social justice. So like, what should I do of those notes? So you must have gone through the X factor notes. What do you think? Should you go use those notes or should you go for the X factor note? So for society and governance, like these X factors were better. For IR, I'm getting confused because like for IR, I mean, ma'am had given a lot of comprehensive stuff. Like she had said that it's difficult to memorize, but if you can do it, it's better. See, if you are confident on those, then you can continue with your those notes and these model answers, and Sir, then but integrate with the current sir, affairs. it's creating confusion because with model answers we can complete paper, but with those answers we can't complete paper. It's very lengthy. So I was Which very one? much confused. So the answers that you are giving, it's Mhm. possible to complete paper because they are very concise and to the point. Mhm. Their answers are more analytical, so it necessarily Whose exceeds what answers are more analytical? ma'am the answers which ma'am had given in my foundation course. So there it word limits get I mean exceeded a lot. So like it's content mismatch is also happening. So I was asking like that if we are doing model Again, answers for IR and Mhm. like and so is it fine? Like is it more than enough? But see, in GS, बाकी subjects in polity, economics, governance, you can say this model answers would suffice. But IR में, because you will be getting the question on the current affairs, so you need to have the current affairs also na in IR. Model answers will cover the previous year questions. It will give you some, जैसे अब bilateral relation का देखा जाए तो they have asked 2 questions, one on Sri Lanka, one on Maldives. But next year इन दोनों पे वो पूछने वाले ही नहीं है. Next year they are going to ask on नेपाल और भूटान. तो कैसे आंसर लिखोगे? Yes, sir. Right. So for IR, if you can follow any of the base notes, but apart from that, you need to have the current affairs notes. So you can use the MAMS notes or you can use the X factor notes. That is the choice that you have to make. ठीक है, अल्टीमेटली या फिर सिर्फ मॉडल आंसर पढ़ो और न्यूज़पेपर को फॉलो करो, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओ यार स्पेसिफिक, दैट विल आल्सो डू, दैट इज आल्सो सफिशिएंट, उतना भी चल जाएगा. Sir, like for IR, like we have to focus on 3 months news that will come between prelims and mains, or for entire year we have to keep नहीं, making. entire year. Okay, sir. So, sir, for that we can't rely on some magazine. मैगजीन जैसे मैंने तो कहा एक्स फैक्टर से, तो जो अभी तक के करंट अफेयर्स है
All I have integrated in X factor. Yes, sir, that I've seen. Prelims के बाद also I will prepare a document for the current affairs. Okay, sir. उतना sufficient. Okay. Thank you, sir. Gautam. Yes. Yes, Anshik. Hello, sir. हाँ. Sir, one thing, actually, what I'm doing, what I want to do, like this, I want to read this, your analysis and this answer sheet. And for X factor, this is huge is there. For IR, I think there is specific things only needed for the exam for mains writing. Mm-hmm. So I want to read only this one, and for basics, I can refer this. But I want to make the notes also align with this your answer sheet that you are providing. But That is question. वो टॉपिक्स का रिलेवेंस कितना है, दैट इज द क्वेश्चन, नो, बिकॉज इन, जैसे मैंने कहा कि जीएस बाकी सब्जेक्ट्स में यू विल हैव लॉट ऑफ रिपीटेशन. यस सर. ठीक है, बट इन आईआर वो हार्डली होता है. हाँ सर, वो होता है. और एक चीज है सर, आईआर में जैसे हम बाकी सब्जेक्ट में हम कीवर्ड लिख के थोड़े लिख सकते हैं, बट आईआर में तो मतलब सेंटेंस कभी कभी लिखना पड़ता है और एग्जाम्पल लिखना पड़ता है, तो यू मतलब नीड वर्डिंग भी फैक्ट्स, ज्यादा हो रहा है. यू नीड फैक्ट. फैक्ट्स इन आईआर. ये सर, क्योंकि हमें स्पेसिफिक चीजें लिखना पड़ेगा वहां पे जो वो मतलब होना चाहिए राइटली. व्हाट्स द डाउट? सर डाउट यही है कि जो मैं नोड मैं चाह रहा हूँ, जो नोड बनाना है मुझे, मैं इसमें से बना लूँ. जो आपके जो ये है, मतलब इसको आप शेयर कर देंगे तो उसी में से मैं बना लूंगा. एक्सपेक्टर को मैं मतलब बेसिक पढ़ सकता हूँ, बट तो फिर इतना मतलब. ऐसे करो ना, जो टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, हाँ हाँ. कि जैसे इंडिया अफ्रीका हमने कवर किया है, तो ये ये सर, और इंडिया अफ्रीका पे वैसे भी क्वेश्चन नहीं आने वाला क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट आएगा. में, तो वो स्किप करो. अब जैसे इंडिया यूएस हमने किया है, हाँ जी ठीक सर. है, इंडिया यूएस ऑल्सो आई थिंक this Central African region we have done two questions. ये So सर. you don't read the Central African region from the X Factor. ये सर. उसमें बस जो रिसेंट करंट अफेयर्स है, रिसेंट न्यूज करके मैंने टेबल डाला है, हाँ हाँ. वही पढ़ो उतना. ठीक है, एंड ठीक है सर. बाकी पूरा टॉपिक स्किप करो. जो टॉपिक्स मॉडल आंसर में कवर है वो टॉपिक एक्स फैक्टर से स्किप करो. ठीक है सर. दैट्स ऑल. थैंक यू सर. यस अंशिका. Hello, यस. good evening, sir. यस गुड इवनिंग. Sir, my doubt is regarding वो Central Asian कंट्री. ओके. region. Yes, हम्म. sir. In that question, you tell me draw the map. So, how to make a how to draw a map easily? इजीली फॉर दैट अगेन यू नीड अ प्रैक्टिस. तो एक पूर्णिमा मैम ने एक शॉर्ट बनाया यूट्यूब पे कि हाउ टू ड्रॉ दी वर्ल्ड मैप. ठीक है, उन्होंने उसमें वेरी ब्रीफली मतलब अच्छे से समझाया कि कैसे आपको वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना है, तो वो एक बार आप देख लो. Yes, sir. Sir, please इसके लिए मतलब ये स्पेसिफिक आंसर के लिए आप ड्रॉ मतलब सिंपल मैनर में कैसे करें, मतलब क्या क्या इसमें डिनोट करना है? मैं मैप यूज ही नहीं करता, मेरे को मैप निकालना ही नहीं आता था, तो आई नेवर ड्रू वर्ल्ड मैप इन माय आंसर्स एवर. ठीक है, मुझे वर्ल्ड मैप निकालना ही नहीं आता था. इंडियन मैप भी बहुत मुश्किल से सीखा हूँ मैं. Or sir, if I want to join your test series, so how can I join it? तो फॉर दैट यू कैन गिव अ कॉल टू द एडमिनिस्ट्रेशन. Okay, तो वही. okay, sir. ठीक है. Thank you. यस दिव्यांका. यस करण. लास्ट डाउट. सर मेरा ऑप्शनल आईआर था सर, तो फिर उसके लिए आप सॉरी. सर मेरा ऑप्शनल भी आईआर था सर, तो फिर उसके लिए आप कुछ पॉलिटिकल साइंस. यस सर, पीएस. ओके. तो स्पेसिफिकली आईआर के लिए हाँ हाँ. इस अप्रोच उधर लाइक कैसे फॉलो करते, लाइक मैं क्या? उसके लिए सेपरेट कोई टेस्ट मतलब कोर्स नहीं लिया है सर, तो इसी अप्रोच को उधर मैं रेप्लिकेट करना चाहूँ तो फिर. आईआर में भी we use the same approach, nothing else. ठीक है, the exact same answer you have to write in the IR. वहां पे भी एक्सेसिव स्कॉलर्स वगैरह नहीं लिखने हैं आपको, वहां पे भी फैक्चुअल ही आंसर लिखना है. ठीक है. ओके. सो गाइस विल एंड आवर सेशन हियर फॉर टुडे. बहुत लेट हो गया. आई विल टेक द रिमेनिंग डाउट्स टुमारो. ओके.